Question number 1. Each set XR contains 5 elements and each set YR contains 2 elements, and union of R equal to 1 to 20 XR equal to S, and that is same as union of R equal to 1 to N YR. Then if each element of S belongs to exactly 10 of the XRs, and exactly 4 of the YRs, then N equal to. So total elements in S will be so 20 into 5. 20 into 5 equal to 100. Similarly, so in S, how many elements will be there? S may, you will be able to see 100 elements. Similarly, we don't know what is the elements in the Y. This is for union of XR. Then union of YR means N such sets are there, and in each set there are 2 elements. So here the condition, if each element of S belongs to exactly 10 of the XR, that means we can say that in S into 10 will be equal to 100, and in each element of S belongs to 4 of YR, means 4 into S is also equal to, so I can say that S means it will become 100 by 10, so it will be 10. 4 into S is become 4 into 10, it will become 40. So I can say that N into 2 equal to 40, therefore N become 40 by 2, 20. Detailed. 1 minute. Okay. So this is the answer. N equal to 2 will be the answer. So 20 will be the answer. So option B is the correct answer for first question. Second one, 2 finite sets have M and N elements respectively.
the total number of subset of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set, the values of m and n respectively. That means number of subset can be written as 2 raised to m and 2 raised to n. So 2 raised to m minus 2 raised to n, it is given as 56. So the values of m and n respectively can be written as. So if I take difference should be means I can say that m is greater than n. So if I take n, so I can write it as 2 raised to m minus 1 equal to 56. So this is always an odd number. I know that 2 raised to anything will be an even number. So this is an odd number and this is an even number. So I can say that when I write this is 8 into 7. So 2 raised to n become 8. So n can be written as 3 and 7 means 2 raised to m minus n minus 1 equal to 7. So 2 raised to m minus n becomes 7 plus 1, 8. So m minus become 3. So m equal to or n equal to m minus 3. So m is okay. Okay, 8 means m minus n should be equal to 3. So we got okay, 2 raised to m minus n equal to 8. So m minus n should be equal to 3. So m minus n 3 means m equal to 3 plus n. N is already calculated, that is 3. So 3 plus 3 become 6. So answer will be, here it is 20. Here it is m comma n. That means m is 6 and n is 3. So I can say that 6 comma 3 will be the answer. Question number 3. Let R be the set of points inside a rectangle of sides A and B with the two sides along the positive direction of x-axis. Let R be the set of points inside the rectangle of side A and B with the two sides along the positive direction of x-axis. Then okay, then x comma y. So this point can be considered as, so I can write like this. I can draw like this. This is A, this is B. So this is actually 0 comma 0. This is 0 comma B. This is A comma 0. This is A comma B. So set of points, x will be always between A and 0. And okay, y will be always from 0 to B.
So question is, inside means we should not consider the border. So we can put x between a and 0. So this will be pakka inside. And y will be pakka between 0 and b. So inside means we should not consider equal. So x greater than 0 less than a and y greater than 0 less than b. So answer will be option D and because the point it is given, it has two sides along the post, then point inside is given. Then question number 4, the domain of the function defined by f of x is equal to, is actually a rational function, 1 by under root of x minus mod x. Anyway, x minus mod x should be greater than 0 because denominator, and it is a square root function also. X minus mod x greater than 0. Okay. So we can consider if x ka value greater than 0, then x minus mod x become x minus x greater than 0. That means x minus x, okay, this condition. So x minus x become 0 only. So 0 greater than 0, that is not possible. If x is less than 0, mod x is actually minus x. So x minus mod x become x minus minus x. It will become minus minus 2x. So x minus 2x should be greater than 0. So here the condition is x greater than 0, and this is not satisfying. 0 greater than 0, that is not defined. Here our assumption is x less than 0, but we are getting that x is greater than 0. Our assumption is negative, but we are getting it is positive. See, this is also contradicting each other. So here getting a solution is not possible. Therefore, the option C we have to consider. So here square root function, we are applying the condition for square root, and we are using the condition for rational function. Denominator cannot be 0, and square root is always calculated for number greater than 0 only. 0 or greater than 0. Question number 5. The domain and range of the real function f defined by f of x is equal to root of mod x minus 1. There x minus 1 should be greater than or equal to 0. So x is greater than or equal to 1. So 1 to infinity. 1 to infinity. So that is the condition. Then y equal to under root of x minus 1. This is our domain. So y square equal to x minus 1. So I can say that x is equal to y square plus 1. So you can put any value of y. You can put any value of y. Okay. And but we know that because if you put any value of y, there is no problem for x. But we know that the square root of a real number is always 0 or positive only. So y should be always
greater than 0 or equal to 0. So we can say that 1 comma infinity, this is our domain, and 0 to infinity will be our range. So option B will be the correct answer. Question number 6. If sin theta and cos theta are the roots of the equation and ABC satisfy the relation, so we can write sin theta plus cos theta is sin theta plus cos theta is minus b by a, means here it is b by a, and sin theta cos theta is c by a. So if you take the square of first relation, I can write it as sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta equal to b square by a square. So 1 plus 2 c by a equal to b square by a square. So if you simplify this one, a plus 2 c divided by a equal to b square by a square. So if you multiply with a square, this is also a square, this is also a square, this is also, and a square get cancelled. So b square minus a square minus 2ac equal to 0, or a square plus 2ac minus b square equal to 0. So a square, which one is the correct option? A square plus, okay, here c, b square by a square. A square minus b square plus 2a square minus b square plus 2ac. A square minus b square plus 2ac. So option D is the correct answer. Option D. D is the correct answer. A square minus b square plus 2ac. Then 7. The value of sin 20, sin 40, sin 60. We know the shortcut. Sin 20, sin 40, sin 60 can be written as sin 3 into sin 20, sin 40, sin 80 can be written as sin 3 into 20, sin 3 theta by 4, and sin 60 is root 3 by 2. So sin 60. So 1 by 4 into sin 60 is root 3 by 2 into root 3 by 2. So 3 by 16. So answer will be option A. Question number 8. If f of x is equal to cos square plus e square x, then f of x is cos square x plus 1 by cos square x. That means we have to take the derivative. So if you take the derivative, or we can say that if I put cos square x is equal to t, so I can write f of x is equal to actually t plus 1 by t. T plus 1 by t. And we know that if you consider two number t and 1 by t, then arithmetic mean is actually t plus 1 by t by 2. Geometric mean is t into 1 by t by root of t into 1 by t. So it will become root of 1 become 1. We know that arithmetic mean is always greater than geometric mean. So t plus 1 by t by 2 is always greater than or equal to geometric mean is 1.
So I can say that t plus 1 by t is always greater than 2. So I can say that f of x is always greater than 2. So option B will be the correct answer. It means arithmetic mean is always greater than geometric mean. That idea we can use. Question number 9. What is the binary number equivalent to the decimal number 32.25? That is a simple question. Here the option A will be the correct answer. We know that how to do. 32 by 2, 16 remainder 0 by 2, 8 remainder 0 by 2, 4 remainder 0 by 2, 2 remainder 0 by 2, remainder 0. So 1 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So option B A, there is a possibility, but 0.25 can be written as 0.25 into 2 become 0.5. So 0. 0.5 into 2 means 1.0. So here 1. So 0 1. So 0 1 means option A is the correct one. Then question number 10. The value of tan 3a minus tan 2a minus tan a. We know we can write tan 3a minus tan 2a minus tan a is always is equal to tan 3a tan 2a tan a. That is shortcut only. Because 2a plus a is 3a. So answer will be option C. Not option tan a tan 2a tan 3a tan 2a tan a. Tan 2 3a tan 2a tan a. Our option will be C option. Then question number 11. The complex number z is equal to x plus iota y satisfy the condition. Then z lies on. That means x plus iota y plus 1. Modulus is 1. That means x plus 1 the whole square plus y square under root is 1. So x plus 1 square plus y square equal to 1. So circle center is minus 1 comma 0. So 11 answer B. Circle with the center minus 1 comma 0 and radius 1. Question number 12. The amplitude of sine pi by 5. Okay. So I can write sine pi by 5 plus I into iota into 1 minus cos theta is 1 minus cos theta is 2 sine square theta by 2. I can write it as 2 sine square pi by 10. And pi by 5 I can write it as 2 sine pi by 5 cos pi by 10 cos pi by 10 by using the multiple angle formula. Plus iota 2 sine square pi by 10. So you can say 2 sine pi by 10 is common inside cos pi by 10 plus iota sine pi by 10. This is actually modulus. And cos pi by 10 plus I sine pi by 10 is actually the complex number part. And here the angle is pi by 10. So I can say that the argument is pi by 10. So option D is the correct answer. Question number 13. The number of solutions
of the equation z square plus mod of z square equal to 0. That means if I put z equal to x plus iota y, so x plus iota y square plus under root of x square plus y square the whole square equal to 0. So x square minus y square plus 2xy iota plus x square plus y square equal to 0. Y square cut. So x square plus x square 2x square plus 2xy iota equal to 0. So I can say that this is 0 plus 0 iota. So x is equal to 0 is a solution. X is equal to 0 is a solution. Then when you write xy equal to 0, so since x is equal to 0, y can be anything. Y can be 1, y can be 2. So along with the 0, there are so many y's are possible. Therefore, infinitely many solution is the correct answer. Question number 14. The point represented by the complex number 2 minus iota is rotated about the origin through an angle of pi by 2 in the clockwise direction. Then the new position of the point 2 minus iota 1, 2 minus iota is here. So here it is 2, 2 comma minus 1, 2 minus iota. This point is rotated pi by 2 in the clockwise direction. So in this way it will go. Okay. So new position of the point. The new position of the point. So when you rotate the point, magnitude remains the same. Only angle changes. Only angle changes. That means, for example, 2 minus iota is equal to r into e raised to iota theta. So if you rotate, that means you can consider, since this angle is theta, I have to consider principal argument. So e raised to minus iota theta. If you rotate 90 degree more means, I can say that r into e raised to minus iota theta plus pi by 2. So I can write r into cos pi by 2 plus theta plus iota. That means we know that when you put minus, it will become minus iota sine theta plus pi by 2. So cos 90 plus theta is minus sine theta. Sine 90 plus theta is cos theta. So iota cos theta. So minus can be taken out. Then it will become sine theta plus iota cos theta. Okay. So if iota is taken out, so minus r iota into cos theta minus iota sin theta you can write. But cos theta minus iota sin theta is already so r into e raised to minus iota theta. That means this can be considered as r into cos theta minus iota sin theta is our 2 minus iota, because already the written 2 minus iota is r into e raised to minus iota theta. So minus iota into 2 minus into minus plus iota square is minus 1. So minus 1 minus 2 iota. So answer will be minus 1 minus 2 iota, option B. Question number 15. Given that x, y, b are real number and x less than y, b less than 0, x less than y and b less than 0, then
So x less than y. If you multiply or divide, here it is in every case you can see this division. When you divide a normal number with a negative number, actually inequality will change the direction if you multiply with a negative number or divide with a negative number. So I can say that x by b is greater than y by b. Option C is the correct answer. Question number 16. All the letters of the word EAMCOT are arranged in all possible ways. The number of such arrangements in which no two vowels are adjacent to each other. So A, E, O. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of such arrangements in which no two vowels are adjacent to each other. That means we can consider like this. First of all, put MCT like this. Now you can see these are the position available. So these three consonants can be arranged in 3 factorial ways, and there is 4 places to arrange the 3 vowels. Then take 4 out of 4, take any 3 and arrange. So 3 factorial is 6, 4p3 is 4 factorial by 4 minus 3, 1 factorial. So 6 into 4 factorial is 24. So 6 into 24 become 144. So option A is the correct answer. Question number 17. In an examination, there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choice. The number of ways in which a student can fail to get all answers correct. That means 4 questions can be in examination. There are 3 multiple choice questions and each question has 4 choice. 3 multiple. 1, 2, 3. Here 4 option, here 4 option, here 4 option. So 4 into 4 into 4, how much? 64 will be there. But in 64 different ways, you can answer the question in which all answers correct means only one option will be the correct. So out of 64 different ways of answering one, all answers correct is only one. So 64 minus 1 will be 63. Those 63 options are there in which you will be able to get, not all the answers are correct. In one way, you will be able to get all the answers are correct. Baki remaining 63 are, we can say that the number of ways in which a student can fail to get all answers are correct. That is question number 17. Then question number 18. That is 18. Okay. 18. The straight lines L1, L2, L3 are parallel and lie in the same plane. The straight line L1, L2, L3 are parallel lines lie in the same plane. Either here M points, N points, here K point. The maximum number of triangles formed with vertices at these points. So total how many points are there? M plus N plus K points are there. From that we can take any 3. This much of total triangle possible. But M points are collinear, so M33 is always cannot form a right triangle. Similarly, NC3 also cannot form a triangle, and KC3 also cannot form a triangle. Therefore, option D will be the correct answer. Question number 19. NC12 equal to NC8 means only option is
n equal to 12 plus 8, 20. So 19, answer A. That is simple question. Question number 20. 1 minus x plus x square the whole raised to n. Then, so if you want to calculate this, put x is equal to 1. A0. Okay. If you put x is equal to 1, 1 minus 1 plus 1, the whole raised to n become A0 plus A1 plus etc. up to A to n. That means 1 1 cancel. So 1 equal to A0 plus A1 plus etc. up to A to n. A0, A1, A2, A3. If you put x is equal to minus 1, it will become 1 minus minus 1, 2, 2 plus 1, 3. So 3 raised to n equal to A0 minus A1 plus A2 minus A3 etc. plus A to n. So if you add these two, you will be able to get A1 terms get cancelled. So 3 raised to n plus 1 equal to 2 times A0, 2 times A2, like that, 2 times A to n. So 2 can be taken out and you will be able to write 3 raised to n plus 1 by 2 will be the answer for the question. So 20 answer option C. Question number 21. The coefficient of x raised to p and x raised to q in the expansion of 1 plus x the whole raised are how to compare the coefficient. Coefficient, how can we write coefficient? 1 plus x raised to n means coefficient is NCR. That means I can say that P plus Q C R. So NCR into x raised to R. So if I want to get the coefficient of x raised to P means P plus Q CP I have to write. If I want to get the coefficient of x raised to Q means P plus Q CQ I have to write. And as per the property of combination NCR, P plus Q CP is same as P plus Q CQ. So I can say that they are equal option A. Option C. Question number 22. Z is given. If Z is equal to root 3 by 2 plus iota by 2. Here I can write root 3. I know that minus 1 plus root 3 iota by 2 is omega. So, and minus 1 minus root 3 iota by 2 is omega square. So, in root 3 by 2 plus iota by 2 raised to 5, that is the first portion. So, if I take I out, I raised to 5, iota raised to 5, 1 by 2 minus root 3 by 2 iota. If I take minus also out, so minus iota raised to 5, minus it will become plus raised to 5. So this is actually omega. So minus iota raised to 5 is minus iota omega raised to 5. So it will become minus iota omega square. The second part, root 3 by 2 minus iota by 2 raised to 5. If I take iota out,
minus 1 by 2 minus root 3 iota by 2 raised to 5 raised to 5. So I can write iota raised to 5 is iota. This is omega square raised to 5. So iota into omega raised to 10. So omega. So iota omega. So my question is minus iota omega square minus iota omega. So iota is common. So minus iota is common. Inside it will become omega plus omega square. I know that omega plus omega square is minus 1. So minus iota into minus 1, it will become minus minus plus iota. So plus iota means here real part is not there. That means real part is 0. So answer will be option A. Iota can be written as 0 plus iota. So real part is 0. Question number 23. If the coefficient of second, third, fourth terms in the expansion of are in AP. Second, third, fourth terms in the expansion of 1 plus x raised to n. Here you can use the Pascal triangle. So when you consider the expansion of a plus b raised to 7, I can say that the coefficients are 1, 7, 21, 25. 21, 35. So 7 plus 13, 21, 21 plus 7 plus 14 is 21. And 21 plus 14 is 35. So second, third, fourth terms are in AP means the corresponding value of n is 7. So question number 23, answer will be option D. Second, third, fourth terms are in AP means n should be considered as 7. Question number 24. A sequence may be defined as question number 24. Domain should be domain, function whose range. A sequence is formally defined as a function whose domain is a subset of the natural number. So domain should be always first term, second term, third term, fourth term, like that. So we can say that domain, that means n equal to 1, n equal to 2, first term. Term may be 5, term may be 10, like that. But n means first term, second term, third term. So domain should be always from the set of natural number. So answer will be option B. Function whose domain is subset of natural number. A sequence is formally defined as a function whose domain is a subset of the natural numbers.
The terms of the sequence are the functions a1, a2, a3. So option B is the correct answer. Question number 25. In a GP of positive terms, any term is equal to the sum of the next two terms. Then the common ratio of the GP is. In a GP of positive term, any term is equal to the sum of next two terms. That means nth term is an, next term is an into r, next term is an into r square. So here it is given that an equal to anr plus anr square. So an cut. So 1 equal to r plus r square. That means I can write it as r square plus r minus 1 equal to 0. So if I use the quadratic formula, r can be written as 1 plus minus 1 plus or minus b square minus 4ac means it will become plus 4 divided by 2. So minus 1, 4 plus 1 root to 5 divided by 2. So r can be minus 1 plus root 5 by 2. It cannot be minus. It can be minus also, no problem. It can be minus, but it is GP of positive terms. If GP of positive terms, okay. So what I have to write? When you write r equal to minus 1 minus root 5 by 2, this will become negative number. GP of positive term means r should be equal to root 5 minus 1 by 2. So r can be root 5 minus 1 by 2. So common ratio, we know that the value of sine 18 is root 5 minus 1 by 4. Sine 18 is root 5 minus 1 by 4. So if you multiply both sides with the 2, it will become root 5 minus 1 by 2. So I can say that option A is the correct answer. Question number 26. In an AP, the pth term is q and p plus qth term is 0, then qth term. That means what is given here? A plus p minus 1 into d is q, and a plus p plus q minus 1 into d is 0. That means a plus p minus 1 into d equal to q, a plus p minus 1 into d plus 2d equal to 0. This can be replaced with q. So q plus qd equal to 0 means q can be taken out. So 1 plus d equal to 0. So q cannot be 0 because p should be a number. So I can say that d equal to minus 1. If d equal to minus 1, what I have to qth term? What is qth term? A plus q minus 1 into d. So a plus q minus 1 into d is minus 1. So what I have to write? Anyway, first of all, I have to calculate what is a. Then only we will be getting the idea. So a plus p minus 1 into minus 1 equal to q means, so I can write it as a minus p plus 1 equal to q. So a equal to q plus p minus 1. A equal to q plus p minus 1. So here I can write q plus p minus 1 plus minus q plus 1 minus q plus q cut minus 1 plus 1 cut. Answer will be B option. B option will be the correct answer. Question number 27.
If x, 2y, 3z are in AP, where the distinct numbers x, y, z are in GP, then the common ratio of the GP. So I can say that x plus 3z equal to 4y and y square equal to xz. Y square is equal to xz. Okay. Okay. Common ratio we have to find out. So x, y can be written as xr, z can be written as xr square because it is a GP. So y square means x square r square. Okay, xr. Okay. So here we will put x plus x means x plus 3z. 3z means 3xr square equal to 4 into y is xr. X can be cut from all the terms. So 1 plus 3r square equal to 4r. So I will be able to write 3r square minus 4r plus 1 equal to 0. So r minus, this can be written as minus 3 minus 1 by minus 3 minus 3 3 1 and 1 by 2. So r, if you solve for this quadratic equation, you will be able to get r equal to 1 and 1 by 3. So common ratio here from the available choice, we can consider r equal to 1 by 3. So option D is the correct answer. Question number 28. The tangent of the angle between the line whose intercept on the axis are a minus b, b minus r respectively. Okay, so how can we write x by a minus y by b equal to 1, a line that is bx minus ay equal to ab, or bx minus ay minus ab equal to 0. Second line is x by a minus y by a equal to 1. So that means ax minus by minus ab equal to 0. So here the slope is minus x plus by. So minus a by b means minus b by minus a by b. So m1 is b by a, m2 is minus a by b means minus a divided by minus b means it will become minus of minus b, minus a by b. So it will become a by b, minus a by b. So what is the angle between these two? Tan theta, we can write it as m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. So theta m1 minus m2 become b by a minus a by b divided by 1 plus b by a into minus a by a cut, b cut. So 1 minus 1 0. Whatever be the numerator, b by a plus a by b become 1 minus 1 denominator 0 tan theta. So what is the problem? m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Okay.
28 square minus, solve once again, 28 x by a plus y by minus b equal to 1. So minus bx plus ay by minus ab equal to 1. So minus bx plus ay equal to minus ab. So minus bx plus ay plus ab equal to 0. X plus b by in this state. So minus a by b means minus minus b by a. Okay. B by m2. M2 similarly I can calculate uh, x upon b plus y upon minus a equal to. So minus ax plus by minus ab equal to 1. So minus ax plus by plus ab equal to 0. So m2 become minus a by b means minus a by b minus a by plus a by. So angle between, so tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. So m1 is m1 b by a. Okay, b by a minus a by b divided by 1 plus b by a into a by b. So there is, in previous case there is some minus problem. So b square minus a square by ab divided by ab plus ab divided by ab cut. So b square minus a square by 2 ab will be the answer, option C. Okay. So you do the minus thought a little carefully. Question number 29. Question number 29. The coordinates of the foot of the perpendicular from the line. For that, we have the formula coordinate of the foot of the perpendicular. X minus x1 by a, y minus y1 by b equal to minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. So we can write x minus 2 divided by a is 1, y minus 3 divided by b is also 1, equal to minus of 2 plus 3 minus 11 divided by 2 square 4, 3 square 9, 13. A square plus b square. So a square plus b square means 1 plus 1, 2 only. Okay. So x minus 2 equal to minus 3 plus 2, 5. 5 minus 11 is minus 6 divided by 2. 6 by 2, 3. So x can be written as 5. Y minus 3 equal to 3 means y can be written as 6. So answer will be 5 comma 6. Option D will be the correct answer. Question number 30. The ratio in which the line divides the distance between the line 3x plus 5 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0. So this is 5.
For example, this is 4, this is 3, this is 2, this is 0, this is 1, minus 1, this is minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. So here the point is at 2. 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we can write 3 is to 6. 3 is to 6. That means, so 6 means 1 is to 2 will be the 30. So we'll see. Okay. Question number 30, you can see question number 30. Distance between two lines we have to calculate anyway. D equal to C1 minus C2 divided by under root of A square plus B square. So if you consider this is 3x plus 4y plus 2 plus 5 equal to 0, and this is 3x plus 4y plus 2 plus 2 equal to 0, and this can be considered 3x plus 4y minus 5 equal to 0. So we can do, what is the distance between these two? 5 minus 2. It can be written as 5 minus 2, C1 minus C2 divided by under root of A square plus B square. So 3 divided by 5. Here it is 2 minus minus 5. Okay, here it is a problem. 2 minus minus 5 is 7. 7 divided by under root of, that means 7 by 5. Here it is 3 and here it is 7. So actually answer is 3 is to 7. Okay, means 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. How many divisions are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, anyway, this is the answer. 3 is to 7 will be the answer. We have to calculate the distance by using this formula. D equal to C1 minus C2 divided by under root of A square plus B square. So first one distance will be 3 by 5. The other distance will be 7 by 5. So if you take the ratio, it will become 3 is to 7. Then question number 31. The area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the ends of its lattice rectum is. X square equal to 12y, it will become like this. And x square 4b, 4 into 3. When you consider x square is equal to 4by, b become 3. So it is 0, 3. Lattice rectum is like this. This 3. So we have to form a triangle like this. This length of the lattice rectum is actually this point. Okay, this 3. It will become plus or minus 6, 3. It will be plus 6, 3. Equal to 3. Okay, half into
this become minus 6 comma 3. So height is actually 3 and base is actually 12. Because we know that length of the lattice rectum is 4b. So 4 into, when you consider this equation with our standard equation x square is equal to 12y, we can say that b is equal to 3. So 4 into 3 become 12. So 4 into 3, 12. 12 will be the base and height is 3. So area will be half into base into height. So half into base is 12 and height is 3. 12 into 3, 36 by 2, 18 will be the answer. 18 square units. Length of the lattice rectum is 4b. Length of the lattice rectum is 4b. Question number 32. The distance between the focus of the hyperbola is 16 and its eccentricity is root 2. Then the equation is hyperbola focus. That means okay. E is given as root 2. Distance between the hyperbola has distance between focus is equal to 16 is given. Okay. So distance between the focus is 16. That is actually, if it is considered as c comma 0 and this is 0 comma minus c, the total distance become 2c equal to 16. And we know the relation b square is equal to c square minus a square. C square minus a square. And e equal to c by a. Okay. So 2c is given as 16, so c is 8 and e is equal to c by a. So 8 by, so we 8 by a, so a can be written as 8 upon root 2. It will become 4 root 2. So a square can be written as 32. And b square equal to c square minus a square. So 64 minus 32 become 32. So x square upon 32 minus y square upon 32 is the equation of the parabola. That means x square minus y square is equal to 32 will be the answer. So option A is the correct answer. Okay. That means you consider a parabola. This is minus a comma 0. This is plus a comma 0. Focus is here. This focus is actually minus a comma 0 plus a comma 0. This distance is given as 2a. 2a is 16. So a become 16 by 2 root 2
8 upon root 2. So it will become 4 root. So we are getting a square is equal to 32. Then next equation kya hai? B square is equal to a square into e square minus. That means b square is equal to a square is 32, e square is 2 minus 1 becomes 32. So x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. So we can write x square upon 32 minus y square upon 32 equal to 1. Therefore, x square minus y square is equal to 32, option A. Question number 33. The locus of the point for which y equal to 0. Y equal to 0 and z equal to 0 हमेशा कहाँ पे आएगा? We will be able to get along the x-axis only. So question number 33 answer is equation of x-axis. Question number 34. Limit extending to 0 sine 1 by x. We know that if you put whatever be the value of x, sine 1 by x always between minus 1 to plus 1. So if you put x into sine 1 by x, you are actually multiplying with a 0 into a finite value. So this will be always 0. So for question number 34, answer will be 0. 34 C. Because sine x is between 1 and minus 1. So you are actually doing 0 into sine 1 by x. Sine x is also less than minus 1, between minus and plus 1, and sine 1 by x is also between minus 1 plus 1. Because if you put any value of angle, the range of sine is always between minus 1 to plus 1. Question number 35. If the line touches the curve y equal to at 6 minus and T2 touches the curve y equal to x plus 3 by x at 1 comma 4, then okay, we can find out the derivative, and derivative will be the tangent of that point. So touches means it is a tangent. So 8 into dy by dx is equal to 2 into x minus 2. Dy by dx to 1 by 4 into x minus 2. Minus 6 minus, so minus 8 by 4 minus 2. Second, that is first slope is minus 2. Second is dy by dx is equal to 1 minus 3 by x square. So if you put 1 comma 4, 1 minus 3 by 1, it will become minus 2. So slopes are equal. If slopes are equal, then we can say that they are parallel only. If m1 equal to m2, they are parallel only. 36. A and B are two even such that P of A union B equal to 0.5. P of A intersection B equal to 0.3, P of B equal to 0.4, then P of A complement B complement. So P of A complement given that P of B complement. This can be written as P of A complement intersection B complement divided by P of B complement. And P of A complement intersection B complement is actually 1 minus P of A union B divided by P of B complement. P of A union B, that is 1 minus 0.5 become 0.5, and P of B complement will become 0.6. So answer will be 5 by 6, option D.
So next question number 37. A coin is tossed 2n times. The probability that the number of heads is not equal to the number of tails. A coin is tossed 2n times. The probability that number of heads is not equal to the number of tails. That means, okay. Anyway, probability of getting a head or tail is actually 1 by 2. If we use 2n times, so we can write it as P equal to Q equal to 1 by 2. That is the probability of getting head and tail. So probability can be written as probability of getting equal number of heads and equal number of can be written as, that means n head and n tail. Out of 2n, n head and n tail we should get. So 2n cn 1 by 2 raised to, that means 1 by 2 raised to n into 1 by 2 raised to n. So this is the probability of getting number of head equal to number of tail. So not getting means from the total probability you can do the minus 2n cn 1 by 2 raised to n 1 by 2 raised to n. So answer will be option A. Question number 38. If the vectors were coplanar, then what is PQR minus bracket P plus Q plus R equal to? If three vectors are coplanar, we know that the A dot B cross C will be always 0. A dot B cross C, that means box product will be always 0. So the board A dot B cross C can be calculated like this. Determinant of P 1 1 1 Q 1 1 1 R. This is always box product. For example, three vectors are in the same plane. Then if you calculate the box product, A box product of ABC, that means A dot B cross C will be able to get the value 0. So this determinant becomes 0. So we can write P into QR minus 1 into R minus 1 plus 1 into 1 minus Q. So PQR minus P minus R plus 1 plus 1 plus 1 minus Q equal to 0. So PQR minus P plus Q plus R, 1 plus 1 become 2. So it can be taken to the other side. It will become minus 2. So option is option D. D option is the correct answer. Question number 39. The number of vectors of unit length perpendicular to the vectors. A vector perpendicular to both the vector means A cross B. If it is unit length means we have to divide with the magnitude also. So we can find out first of all A cross B. What is A cross B? A cross B means 1 I J K. So I become 1 minus J 1 plus K 1. That means I minus J plus K. This is a vector perpendicular to both I and J. So this is actually A cross B. So if you want to get a unit vector perpendicular to this, we can write it as A cross B divided by modulus of A cross B. That can be written as I minus J plus K
divided by mod magnitude is actually 1 square plus 1 square plus 1 square, it will become root 3. So this is a vector. So if you take the direction in the positive side also, negative side also, you will be able to get a unit vector either in the both the direction. So number of vectors unit length perpendicular to the vectors means actually answer will be 2. Option C is the correct answer. That means a vector, this is A, this is B. A vector can be like this also, like this also. So answer will be 2 unit vectors are possible. Question number 40. A equal to 4, B equal to 2, and the angle between A and B is pi by 6, then A cross B the whole square. A cross B the whole square, we know that A square plus B square sine square theta. A cross B the whole square. A square is 16, B square is 4, sine square theta, sine 30. So 1 by 4, 4 get cancelled. Answer will be 16, option B. Question number 41. If a line is equally inclined to the coordinate axis, then each of its direction angles. Equally inclined means cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. That means if alpha, beta, gamma are equal, I can say that cos square alpha equal to 1 by 3 cos alpha equal to plus or minus 1 by root 3. So alpha can be written as cos inverse root 3. Cos alpha equal to 1 by root 3. So cos alpha equal to 1 by root 3 means alpha equal to cos inverse 1 by root 3. But we can say that sec alpha equal to plus root 3 or plus or minus root 3. So alpha can be written as sec inverse root 3. So option C will be the answer. Question number 42. The distance from the point to the point where the line meets the plane x plus y z is. So here, general point on the plane can be, general point of the line can be written as x is equal to 2 lambda minus 3, y equal to lambda plus 2, and z is equal to 2 lambda plus 5. This point is, this line is meeting the plane. So this point can be put on the plane also. So 2 lambda minus 3 plus lambda plus 2 plus 2 into 2 lambda plus 5 equal to 3. So 2 lambda, lambda, 4 lambda minus 3 plus 2 plus 2 into 5, 10 equal to 3. 2 lambda plus lambda, 7 lambda plus 9 equal to 3. So 7 lambda equal to 7 lambda equal to minus 6, lambda equal to minus 6 by 7. So you can get the, if you substitute this lambda into this point, you will be able to calculate the points also. What is the point? You will be able to get when you consider 2 into lambda, 2 lambda minus 3. What is 2 lambda minus 3? 2 lambda minus 3 means 2 into minus 6 by 7 minus 3 minus 2 into minus 6, 7, 33. 2 lambda minus 3. Okay.
So question is okay. Okay. Here we are getting the general point. So lambda equal to minus 6 by 7. Direction ratio of the distance between so minus 12 minus 21. Okay, 33 by 7. Another thing, we can calculate the distance of the point like this: lambda into mod of lambda into direction vector of the line equal to. This is actually the distance to the intersecting point. Distance to the intersecting point. Here, if you calculate the point, you will be able to get x also, y also, z also. Then you can use the distance formula: x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. You will be able to get the answer. So it will be a little taking lengthy. So here, if you write mod of lambda into direction vector, so what is direction vector? Modulus of direction vector. We will be able to get the distance to the intersecting point. So direction vector is 2 square plus 1 square plus 2 square. It is actually 3. So 6 by 7 into 3 means 18 by 7. So answer will be 18 by 7. Option B is the correct answer. Okay. Okay. Then question number 43. 43. A plane phi makes intercept 3 and 4 on the x and z axis. If phi is parallel to y axis, then its equation is. If a plane is parallel to y axis means it is not making any intercept on y axis. Therefore, we can write the equation x by 3 plus y by 4 equal to, not y by 4. Okay. X by 3 plus z by 4 equal to 1. Because it is not making an intercept on y axis. So I can say that 4x plus 3z minus 12 equal to 0. So, or we can write 4x plus 3z equal to 12. So option D is the correct answer. Question number 44. If the altitude of a triangle are in AP, then its sides are in okay. How to do this one? Question number 44. Area. For example, if you consider a triangle, this is A, this is B, this is C. Altitude. This is altitude. This is altitude. This is also altitude. So delta is equal to half into H1, H2, and H3. So half into A into H1, half into B into H2, half into B into H3. Since these all are equal, so I can say that height H1 equal to 2 delta by A, H2 equal to 2 delta by B, H3 equal to 2 delta by C.
So here everything is 2 delta is common for everything, and we know that A, B, C are in H1, H2, H3 are in AP. Then the reciprocal 1 by H1, 1 by H2, 1 by H3 will be in Pakka HP. So what is 1 by H1? A by 2 delta, B by 2 delta, C by 2 delta. If you divide all the numbers of a AP with some constant, okay, so H1 is AP means 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. So if you take the reciprocal of that, that will be in HP. So A, B, C are in HP. It will be HP. So we can take this and we can say that ABC. 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP means reciprocal will be Pakka compulsory in HP. So answer is 44, option A is the correct answer. Good question. Question number 45. If D is the value of the determinant of a non-singular matrix of order and then the determinant is adjoint. Okay. Determinant of adjoint, we know what is the formula of determinant of adjoint. Determinant of A raised to n minus 1. What is determinant of A? D. So answer will be D raised to n minus 1. Option D will be the correct answer. Determinant of adjoint is determinant of A, the whole raised to n minus 1. Question number 46. If A is a 2 by 2 matrix such that A raised to 2009 plus A raised to 2008 is equal to I, then what is A raised to 2008 raised to minus 1? Okay. So if you take A raised to 2008, it can be written as A plus I equal to I. Okay. So if a matrix is multiplied with another matrix and if you are getting an inverse, we can say that if you are getting an identity matrix, we can say that the inverse of this one is this one. This is normal matrix and this will be inverse. If you multiply matrix with the inverse only, then we'll be able to get identity matrix. So I can say that if I take 2 raised to n inverse, that will be Pakka equal to A plus I. So answer will be option A. If you multiply a matrix with a inverse of this matrix, you will be able to get identity matrix. So we can say that the inverse of A raised to 2008 is A plus I. Question number 47. For team A, x bar equal to 20, z is equal to 2, and for team B, y bar equal to 25, z y equal to 1.8. The statement team A shows more variation is coefficient of variation. What is coefficient of variation? Coefficient of variation is sigma by x bar into 100. So we can say that 2 by 20 into 100, 10 into 2, 20 by 2, 10. Second, sigma by y bar into 100 means 18 divided by 25 into 100, 4 into 18. 4 into 18 become 72. 72. So this is actually 10% variation. This is actually 72% variation.
So what we can say, the statement team A shows more variation is okay. Statement team A shows more variation. Coefficient of variation 10%, coefficient of variation. So this is here what mistake we have done. This is 100 by 4, 100 4 into this is actually this is 1.8. So we have to put 1.8. So 7.2. So coefficient of variation is more for the team A because 10 percentages is pakka greater than 7.2 percentage. So I can say that the team A shows more variation is a true statement. Answer is B. Question number 48. The variance of the first n natural number is, because we can calculate x bar is equal to 1 plus 2 plus etc. That will become n into n plus 1 by 2. And if I take x bar, x square bar, I can say that n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Here also n cut, so n plus 1 by 2. Here it is n cut, so it will become n plus 1 into 2n plus 1 by 6 because we have to take the mean. So now you have to divide with the number of times. So n plus 1 by 2 and it is n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Variance, we know that. What is variance? X square bar minus x square bar the whole square minus x bar the whole square. That is the variance. That can be written as n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus n plus 1 by 2 the whole square. So if you solve for this one, so n plus 1 by 2 into 2n plus 1 by 3 minus n plus 1 by 2. So n plus 1 by 2, 2 into 2 4n, 2 minus 3n minus 3 divided by 6. So n plus 1, 4n minus n minus 1 divided by 12. So n square minus 1 by 12 will be the answer. So option C is the answer. Okay. So that is the answer for question number 48. Question number 49. It is given that it is continuous. Continuous means the limit should be equal to the value of the function at that point. So x square minus 9 by x minus 3 become x plus 3. So limit can be called 3 plus 3, 6. So 2 into 3 plus k is also equal to 6. 2 into 3, 6 plus k equal to 6. So k equal to 0. 49, option B is the correct answer. Question number 50. The number of solutions of the so log x minus 3 the whole square to the base 2. So I can write x minus 1 equal to x minus 3 the whole square. So x square minus 6x plus 9 equal to x minus 1, x square minus 7x plus 10 equal to 0. So x minus 5 into x minus 2 becomes 0. So 2 and 5. So number of solution will be question number 50. Answer will be option, okay, 2 and 5. Another thing, if I put 2 and 5 are the option, but in this x minus 1, if you put in x minus 3, if you put, you will be able to see that that is 2 minus 3. 2 minus 3 become minus 1. So you will not be able to calculate log of this. So we cannot consider 2 as a solution. Only thing is 5 is the solution. So only one option is, one solution will be
possible because logarithm of a negative number you cannot calculate. So you cannot put 2 in log of x minus 3. Question number 51. Okay, here I can write 1 by 2. If you convert into exponential form, 1 by 2 raised to 2 equal to log x log 32 to the base 4. This is 1 by 4. So I can write log x, this is 4 only, log of 4, 32 to the base 4. So log x log 2 raised to 5, 2 square is equal to 1 by 4. So 5 can be taken, 2 can be taken. So log 5 by 2 equal to 1 by 4. So x raised to 1 by 4 become 5 by 2. So if you take the fourth power, x become 5 raised to 4 by 2 raised to 4, 625 by 16. Answer will be option C. 52. A function defined from a natural number to integer is defined by f of n equal to n minus 1 by 2. If n is odd and f of n equal to minus n by 2, if n is even, then the function f is. So if you put n equal to 1, it will become 1 minus 1, 0 by 2, 0. It will become 0. When you put n equal to 3, 3 minus 1, 2 by 2, 1. When you put n equal to 5, 5 minus 1, 4 by 2, 2. Oh, so I think it is going like this. 1, 3, 5, 7. 7 minus 1. 7 minus 1. 6, 6 by 2, 3. So it is going like this. When you put n equal to 2, 2 minus 1, 1 by 2, n equal to 4, 4 minus, sorry, it is not, here you have to use the definition minus n by 2. Minus n by 2 means minus 2 by 2, minus 1. Here it is minus 4 by 2, minus 2. When you put n equal to 6, minus 6 by 2 become minus 3. That means for every element there is, so it, separate images are there. So I can say that it is a one-to-one function and every member of Z is also considered. So I can say that it is an onto function. So this is one also, onto also. One and onto both. So answer will be option D. Question number 53. The probability that 4 children selected random would have different birthdays. Different birthdays. Okay. Okay. So first, for the first student, we have 365 out of 365. The year can be considered as a non-leap year because it is leap year is not mentioned. Second children, so 364, remaining 364 out of 365. Then third children, 363 out of 365. Then fourth child, 362 out of 365. Because non-repeating days should not be. So 365, this 365 cut. So 364 into 663 into 662 divided by 365, the whole cube. Option will be C answer. C will be the correct answer.
For the first child, 365 options are there. For the second child, 364 options are there. For the third child, 363 options are there. For the fourth child, 362 options are there. Question number 54. If A1, A2, etc., A8 are independent even such that probability of A I is equal to 1 plus 1 by I, then the probability that none of them will occur is none of them will occur. So none of them will occur means A1 dash, A2 dash, A3 dash, A4 dash, etc. up to AI dash we have to consider. So what is the probability of A1? 1 by 1 plus 1, 2. So corresponding A1 dash also 1 by 2. Second case 1 by 1 plus 1, 1 plus 2, 3. 1 by 3, so it will become 2 by 3. 1 by 4, it will become not 2 by 3, it is 1. 2 by 3, correct. This is 3 by 4. 1 by 5, corresponding complement is 4 by 5. So it will go like this. If you take, so I can write 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 4 into, it will go up to 4. Up to 4. Up to 4 means up to here, first, second, third, fourth. Fourth means 5. So eighth means it will become, I think, 8 by 9. So this cross cut. So only pending thing is 1 by 9. So answer will be 1 by 9 will be the answer. Option D is the correct answer. Then question number 55. N plus 2 into n factorial. N plus 2 into n factorial. Okay. When you write n factorial plus n plus 1 factorial, I can write n plus 1 n factorial plus n plus 1 into n factorial. N factorial, that is 1 plus n plus 1. So I can write it as n plus 2 into n factorial. So n plus 2 into n factorial, that means I have to consider like this. So answer will be n factorial. So n plus 2 into n factorial, I can write it as n plus 1 plus 1 into n factorial. So n plus 1 into n factorial plus 1 into n factorial. This will become n plus 1 factorial and this will become n factorial. Option B is the correct answer. 56. 15 CR is equal to 15 CR plus 3. Then only option is R equal to R plus 3 should be equal to 15. 2R equal to 15 minus 3, 12. R equal to 12 by 2, 6. So 6 C4, 6 C2. So 6 into 5 divided by 2, 6 into 5, 30 by 2 is 15. So 56 answer is A. If x square plus x plus 1 equal to 0, then
x square plus x plus 1 equal to 0. You divide every term with x. X square plus x plus 1 equal to 0. So we can find out the roots. We know that the roots are omega and omega square. So if you consider omega and omega square are the roots, so omega plus 1 by omega the whole square plus omega square plus 1 by omega square the whole square. Like that it will go up to omega raised to 27 plus omega raised to 27 the whole square. It is omega plus omega square. 1 by omega is omega square. So omega square the whole square plus omega square omega the whole square. Like that it will go up to omega raised to 27 is 1 plus 1. So this 1 plus omega plus omega square is minus 1. So minus 1 ka square is plus 1. So plus 1. So up to 1, 2, 3, 27. So 27 times will be there. So 27 into 1 become. So answer will be, okay, 1 plus omega square. So I can write okay. So 27. Second, x square plus x plus 1 equal to 0. X is equal to omega and x is equal to omega square. These are the roots. Plus 1. If I put omega square also, omega square plus omega the whole square. There is also minus 1 plus square. There is 1. So you are getting 1 plus 1 plus 1 plus. Okay. Okay. So we have to. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Here it will be, in first term it will be 1 only. Here is also 1 only. But when you take x cube plus 1 by x cube the whole square, I have to write omega cube plus 1 by omega cube the whole square. So this is actually 1 plus 1, 2 square. This is actually 4. 1 plus 1, 2, 2 square, 4. So here you have to consider 4. Here also 4. Here also 4. Here also 4. 4, 4, 4, 4, 4. So how many 4s are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 36 will be there. Then remaining 1, 2, 1, 2. Out of 27 times, 9 times are coming. So 27 minus 9. It will become
18. So 36 plus 18 become 54. So we have to be careful because omega plus omega 1 by omega and omega square plus 1 by omega square, that is 1 plus 1 2 only. But when you consider omega cube plus 1 by omega cube, it will be 1 plus 1 2 2 square is 4. Such 9 times are there. So 9 into 4 36. So 36 plus remaining 18. So 18 plus 36 become 54. Therefore, answer is option A. Question number 58. If omega is a complex cube root of unity such that 1 plus omega raised to 7 equal to, then that means 1 plus omega, we know that minus omega square raised to 7 equal to a plus b omega. This is minus omega raised to 14. 40 equal to a plus b omega. So minus omega 2 equal to a plus omega minus omega square is 1 plus omega equal to a plus b omega. So minus 1 minus omega equal to a plus b omega. So a equal to minus 1 and b equal to minus 1. Then a is minus 1, b is also minus 1. Option 58, option D. What is the problem? What is the problem? Okay, 1 plus omega is 1 plus omega is minus omega square. 1 plus omega is minus omega square. Minus omega square minus omega raised to 14. So omega cube equal to 1 means minus omega square. Minus omega square is minus 1 minus omega. Okay, omega square is minus 1 minus omega. So minus omega square is 1 plus omega. Okay, sorry, 1 plus omega. So A become 1 and B become 1. So answer is option C. Please do carefully because 1 plus omega equal to minus omega square. Therefore, I can say that omega square is equal to minus 1 minus omega. So omega minus omega square can be replaced with 1 plus omega. So A equal to 1 and B equal to 1 will be the answer. Okay. So option C is the correct answer. Question number 59. If ABCD is a cyclic quadrilateral, then cos A plus cos B plus cos C plus cos D. We know that A and C are cyclic quadrilateral means A and C are supplementary. So cos A is actually minus cos C only. So they will be getting cancel each other. So cos A, cos C get cancel, cos B, cos D cancel. Answer is the option. Sin A plus sin B plus sin C equal to 3 root 3 by 2 means only option is 3 into root 3 by 2. That means 60, 60, 60. So A equal to B equal to C means it should be a equilateral triangle. Question number 61. If x, y and theta are real numbers such that sin 2 theta equal to x square plus y square plus divided by 2xy. Okay. So sin 2 theta. What is the value of sin 2 theta? Sin 2 theta maximum value is 1 and minimum value is minus 1. That means x square plus y square divided by 2xy is between 1 and minus 1. Now we know that x square plus y square is always positive. Then when you consider x square y square, arithmetic mean is x square plus y square by 2. Geometric mean is under root of x square y square xy. Arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean. So x square plus y square by 2 is always greater than or equal to xy. So x square plus y square
is always greater than or equal to 2xy. So we can say that numerator in the given condition, numerator is always greater than the denominator. Numerator is always greater than the denominator. So numerator is bigger and smaller, then the value should be, this value should be greater than 1. That means we can say that x square plus y square divided by 2xy is always greater than 1. X square plus y square by 2xy is always greater than 1. Greater than 1, but it can go up to maximum 1 only. So if you want to say that this is equal to 1, this is the only possibility is equal to 1, then we can say that x square plus y square is equal to 2xy. Because this is sine 2 theta, the value of sine 2 theta cannot go beyond 1. So x square plus y square divided by 2yx is anyway greater than or equal to 1. But we cannot consider greater than 1. So maximum we can consider equal to 1. So x square plus y square equal to 2xy. Okay. So if you want to say that x square plus y square is equal to 2xy, then only possibility is x is equal to y. X is because x square plus y square is square. Square is always a positive number. So x should be also positive, y should be also positive. X cannot be negative, y cannot be negative. Both x and y are negative means it will become positive. Anyway, x square plus y square minus 2xy equal to 0. See, we can write it as x minus y the whole square equal to 0. Then also I can write it as x is equal to y. The option is option D. So we can use the concept of arithmetic mean and geometric mean. Arithmetic mean is always greater than geometric mean. Question number 62. Sin inverse x by 5 plus cos inverse 4 by 5 pi by 2 means, then we know that sin inverse theta plus cos inverse theta is pi by 2. Then only option is x is equal to 4. Answer is B. 63. If E equal to sin cos x plus cos x, then the greatest value of E. Greatest value of E. If I put cos x is equal to t, if I put cos x is equal to t, I can write E equal to sin t plus cos t. So if I multiply with root 2 and divide with root 2, sin t by root 2 plus cos t by root 2, I can say that root 2. This can be written as sin a cos b plus cos a sin b. Sin a cos b plus cos a sin b. If I put pi by 4. Sin 45 is also 1 by root 2. Cos 45 also 1 by root 2. So this can be written as sin 44, sin 45 plus t. Okay. Then the greatest value. I know that the maximum value of sin is 1 only. So this will be root 2 is the maximum possible value. Option A is the correct answer. 64. If the point 1 comma 1 lies on the line passing through the points a comma 0 and 0 comma b, then so x by a plus y by b equal to 1. So if I put 1 comma 1, 1 by a plus 1 by b become equal to 1. So answer will be 64C.
Question number 65. The area of quadrilateral whose sides are along the lines x is equal to 0, x is equal to 4, and y equal to -3, and y equal to 5 is the area of the quadrilateral whose sides are along the lines x is equal to 0. This is x is equal to 0, x is equal to 4 means this is y equal to -3 means here it is y equal to -3 and y equal to 5 means here. So this is 3, this is 5, so it is 8. Then this is 4. So 8 into 4, 32. Length into breadth is equal to. So answer is option B. Question number 66. If the vertices of a triangle 0, 0, 3, 0 are, then its orthocenter 0, 0, 3, 0, 0, 4. So it is a right angled triangle. For a right angled triangle, always the orthocenter is at the right angled point. Answer is option D. Then question number 67. If alpha is a complex number such that alpha into alpha plus 1 equal to -1, then alpha raised to 31. Okay. Alpha into alpha plus 1. So if I write alpha square plus alpha equal to -1, so alpha square plus 1 equal to 0, then for alpha equal to omega or omega square. Alpha equal to omega. Omega raised to 31. Omega raised to 31 means omega raised to 1. Or omega square raised to 31 means omega raised to 52. So omega square. So omega, so 60, 31. The complex is such that then alpha raised to 31. So alpha can be omega also. Alpha can be omega also, omega square also. So omega square means it will become omega. Omega, if I put alpha equal to omega, it will become omega only alpha. If I put omega square, it will become omega raised to 31 the whole square. So it is omega, so omega square. It will become omega square. So it can be both alpha also. Since alpha is equal to omega, it can be alpha also, alpha square also. So alpha square plus alpha plus 1. So both answer can be possible. This also, this also. Question number 68. If the complex number Z1 and Z2 form an equilateral triangle with the origin. Okay. Z1, Z2. This is 0. So modulus of Z1, modulus of Z2 are equal. And modulus of Z minus Z2, Z1 minus Z2 also equal.
So Z1 square, if you take the square, I can write it as Z1 square plus Z2 square minus 2 modulus of Z1 into Z2. Z1 Z2 both are equal. If it has some value R, so R square plus R square minus R square. So equal to 0. So answer will be option B. Z1 square plus Z2 square. Hmm. It's a problem. So Z1, Z2, Z1 minus Z2. Distance between these two. Z1, Z1. Z1 square plus Z2 square minus 2 Z1 Z2. So it should be 0. Z1 square plus Z2 square minus Z1 Z2 minus 2 Z1 Z2. So Z1 minus Z2. Option B is not. No. Option A, but option A 2 it is not there. But here the condition it is given. We have to check this because it is saying that if Z1, Z2, Z3 form an equilateral triangle, then pakka Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to Z1, Z2, Z2, Z3 plus Z3, Z1. Since Z3 is equal to 0, this becomes 0, this becomes 0, this becomes 0. So Z1 square plus Z2 square minus Z1, Z2 become equal to 0. That is why option A is the correct answer. Okay. अभी 10 मिनट है उसके बाद किसी और मोहम्मद भाई है 69 question number 69. Every person shake hand with the other guest in a party. If the total number of shake hand is 66, then the number of guests. So NC2 equal to 66. So n into n minus 1 by 2 equal to 66. So n into n minus become 132. So 12 into 11 equal to 132. That means you can say n equal to 12. Question number 70. If a card is drawn from a pack of 52 playing cards, then the probability of getting a king or a heart or a red card is. If a card is drawn from a pack of 52 playing cards. King matlab 4 by 52. Heart matlab और heart matlab
13 out of 52, and that means we have to use this formula. That is the correct version. P of B union C equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B, P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. Okay. P of A 4 by 52. Heart 18 out of 52. Red 26 out of 52. Minus king or heart. King and heart. King and heart matlab 1 by 52. King and red 2 by 52. Heart and red. Heart भी आना चाहिए. Heart and red matlab that is also king heart 1 by 52. King and red 2 by 52. Heart or heart and red. That is 18 out of 52. Then plus king and heart and red. 1 by 50. If you solve for this one, 13 plus 4, 17. 13 Answer will be 7 by 30. Option A. Question number 71. Suppose n greater than or equal to 3 persons are sitting in a row. N persons are sitting in a row. 2 of them are selected at random. 2 of them are selected at random. Probability that they are not together. Suppose n persons are sitting in a row. Two of them are selected at random. So NC2, how many ways we can, total number of ways is NC2. Then how many adjacent pairs are there? These are two adjacent, these are two adjacent, these are two adjacent, these are two adjacent. For example, 1, 2, 3, 4, 5. N equal to 5. How many adjacent pairs are there? 4. So if I want to get their adjacent pairs, I have to take, I have 4 options. So if I have n people, so I will be having n minus 1 option for taking 2 people together people. So n minus 1 out of NC2. So this is not our requirement. Not together means 1 minus n minus 1 NC2.
So if I solve for 1 minus n minus 1, NC2 is n into n minus 1, 2 into 1, n minus 1, cancel, 1 minus 2 by n. So n minus 2 by n will be the answer. Or 1 minus 2 by n. So 71 option B is the correct answer. Direction for question number 72 to 76. F of x is equal to 1 by x minus 1, where, okay, 1 by x minus 1 plus 1 by minus x minus 1 plus 2, cancel, equal to 0. Option D. 72D. Then, question number 73. F of x minus 2. F of x minus 2 into f of x. So 1 by x minus 1 minus 2 into f of 2x means 1 by 2x minus 1. So 1 by x minus 1 minus 2, 2 minus 1 by x plus 2. 2 minus 1. Answer will be 73, option A. Simple questions only. 74. F of 1 by x become x minus 1 minus 1 by 1 plus f of x is 1 by x minus 1. So x minus 1 minus 1 plus 1 cut. So it will become x cut. So answer will be minus 1. 74 answer is B. 75. Refer to the direction f of 1 minus x. F of 1 minus x means I can write 1 by 1 minus x minus 1 by 1 minus x minus 1. So 1 minus 1 minus plus x divided by 1 minus x. 1 cut. So I can write x by 1 minus x. X by 1 minus x. So question number 75. Okay, x by 1 minus x. So if I consider f of x, what is f of x? 1 by x minus 1. That can be written as 1 minus x by x. So this is actually the reciprocal of f of x. So I can say that f of 1 minus x is the reciprocal of 1 by f of x. So answer is 75, option C. 76. Refer to the directions f of x plus f of, okay, it will become 1 by x minus 1 plus 1 by x plus 1 minus 1. So 1 by, okay, 1 by x plus 1. So if I solve for this one, 1 minus x by x plus 1 minus 1, 1 minus x minus 1 by x plus 1. So 1 get cancelled. So 1 minus x by x plus minus x by x plus 1. Okay. Okay, not like this. I will do once again. 76. F of x is 1 by x minus 1. 1 by f of x plus 1 is 1 by x plus 1 minus 1. So 1 by x minus 1 plus x plus 1 divided by 1 minus x minus 1. 1 get cancelled. So 1 minus x by x plus x plus 1 by minus x. So
I can write it as 1 by x minus x by x is 1 plus x by minus x is minus 1 minus 1 by x. So 1 by x, 1 by x cancel, minus 1 minus 1. So minus 2 will be answer. Option D. Question number 77. So question number 77. The variance of x is 36. Therefore, the variance of y when 3x plus 4y equal to 20. So I can write 4y equal to 20 minus 3x. So y equal to 5 minus 3 by 4x. So I can say equal to y equal to a plus bx. As per the property, variance of a plus bx can be written as b square into variance of x. So what is b square? B square is actually minus 3 by 4 the whole square. Variance of x is 36. So 9 divided by 16 into 36. So it will become 4, 9, 81 by 4. That means it will become 20.25 will be the answer. Option D. 78. If A is a square matrix, then adj of A transpose minus adj of A the whole transpose. Adj of A transpose, as per the property, adj of A transpose is same as adj A the whole transpose. So they are getting mutually cancelled. That means we will be able to get a square matrix of all the elements are 0. So we can say that the answer is a null matrix. 79. If A is a square matrix of order n by n, then adj of adj A. As per the property, adj of adj A is determinant of A raised to n minus 2 into A. So option A is, that is, we have to directly use the property. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Question number 80. If A is a non-singular matrix of order n by n, then adj of A. Determinant of adj is determinant of A the whole raised to n minus 1. Therefore, option B. Question number 81. If A is a non-singular matrix, then A into adj A. A into adj A is actually determinant A into I. Determinant A into I. So determinant A into I means it can be a scalar matrix. A is a singular matrix, then A into adj A. Singular matrix means A into adj A, we know that A into adj A formula is determinant A into I. Singular matrix means determinant A equal to 0. So determinant A into I become 0 into I. So it will be a null matrix. So 82.
null matrix. 83. The equation has how many solutions? Root 3 sin x plus cos x is equal to 4. The maximum value of a cos x plus b sin x is actually under root of a square plus b square. So this becomes 3 plus 1 equal to root 4. Root 4 equal to 2. So that means maximum value is 2. It cannot be 4. So solution is not possible. If the angles of a triangle and the ratio 4 is to 1 is to 1, then the ratio of the longest side to the perimeter. So 4 is to 1 is to 1 means 4, 6K 180. Here become 30 degree. 30 degree. So this is the longest side. Longest side. If you use sine rule, for example, this is A. So longest side to the perimeter, A plus B plus C. K cancel. Sine 120 is sine 90 plus 30 cos 30. So root 3 by 2. Sine 120 root 3 by 2 plus sine 30 1 by 2 plus 1 by 2 1. So we can write root 3 by 2 divided by root 3 plus 2 by 2, 2 cancel. So answer is root 3 equal to root 3 plus 2. Option A. Cos square A plus cos square B plus cos square C equal to 1 means the only option I have 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. So triangle will be question number 85. It should be an okay. Cos square A plus cos square B plus cos square C equal to 1. Cos square A plus cos square B plus cos square C equal to then triangle ABC is this is actually a well-known result of a right-angled triangle. That means in a right-angled triangle, cos square A plus cos square B plus cos square C equal to 1.
Therefore, angle will be right angle. So triangle will be right angle. Cos square A plus cos square B plus cos square C equal to 1. Then triangle ABC is right angled triangle. Then, but if I put A equal to B equal to 60, 60, 60, that cannot be valid. It cannot become equilateral triangle because cos 60 become 1 by 2. So 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by that cannot be satisfied. So we have to understand that if cos square A plus cos square B plus cos square C equal to 1, that is a well-known property of a right angled triangle. For example, if you consider 30, B equal to 60, if you put C equal to 90, cos square 30 is 3 by 4, cos square 60 is 1 by 4, cos square 90 is 0. So 3 plus 1, 4 by 4 equal to 1. So answer will be right angled triangle. Then question number 86, tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to pi by 4. So by using the property of, so I can write tan inverse 2x plus tan inverse 3x become tan inverse 5x divided by 1 minus 2 into 3, 6x square equal to pi by 4. That means 5x minus 1 minus 6x square. So it is actually tan pi by 4, not pi by 4. It is tan pi by 4. There is a printing mistake in question. It should be tan pi by 4. Tan pi by 4 means, tan pi by 4 means 1. So we have to write. So there is a mistake in this question. So this is actually not pi by 4. It is tan pi by 4. Tan pi by 4. Tan pi by 4 means it is equal to 1. So we can write. Okay. Okay, correct. The question is correct only. Sorry for the mistake. So we can write this is equal to pi by 4. So I can say that 5x by 1 minus 6 square equal to tan pi by 4. Tan pi by 4 equal to 1. So if you solve for this one, 5x equal to 1 minus 6x square. So 6x square plus 5x, 6x square plus 5x minus 1 equal to 0. So x can be uh, if you solve for this, I will be getting minus 6. So it is minus 3. It can be written as okay, plus 6 and minus 1. So 6 by minus 6 and minus 1 by minus 6. So 6 by minus 6 minus 1. This becomes plus 1 by 6. So minus 1. X can be minus 1 and 1 by 6. Okay. X is equal to minus 1 and x is equal to 1 by 6. So okay. If I put x is equal to minus 1, minus 1 means okay, 1 minus negative. .
When I put 5x by 1 minus 6x square equal to 1, if I put x is equal to minus 1, so tan inverse minus 2 plus tan inverse minus 3, tan inverse minus 1, tan inverse minus 3. Okay. Mm, tan inverse 2, tan inverse minus 3. So here minus 1 cannot be the solution. Only the answer is 1 by 6. Option D is the correct answer. Only valid result is 1 by 6. Both are negative means that cannot be possible. That means tan inverse minus 2 means, okay, here, okay, it is correct only, but how to explain x is equal to minus 1 is not possible. Both small positive in the values giving small positive. So if so here we are getting two options, minus 1 and plus 1 by 6. But minus 1 we cannot consider, only 1 by 6 is the correct answer. Question number 87. Sin inverse sin 3. So sin inverse sin 3. So sin inverse sin 3 means sin. If I put pi minus 3, then only I can keep this between minus 5 by 2 to plus 5 by 2. So sin inverse sin 3 become pi minus 3 because 3 is more than 5 by 2. So if I want to keep the principal range between minus 2 to plus 5 by 2, minus 2 to plus 5 by 2, so I have to give sin inverse sin pi minus 3. So answer is option B. Number 88. The sum of 1011.01, 1001.11, 1 plus 1 0 1, 1 plus 1 0 1, 1 plus 1 1, 1 plus 1 0 1, 1, 1 plus 1 0 1, 1 0 1 0 1. Okay. Good, good. अभी 87 तक हो गया. हाँ.
वन, अच्छा आंसर है ये आ गया क्या, ये वाला तो ठीक है। ठीक है 11 0 11 0 ठीक था ये, ठीक है सी आंसर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अभी हम स्टार्ट करने वाले कहाँ, क्वेश्चन नंबर 89 से। 89, क्वेश्चन नंबर 89 ये क्या है। इफ ए रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 4, तो अगर इसका 4 रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4p इज इक्वल प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 16 4p बराबर कितना आएगा, 16 प्लस 12 कितना आएगा, 28 बराबर, लेकिन -28 आएगा। तो p कितना आएगा अपना 7, -7। तो p तो फ्री में आ गया। वेल हमें p निकालना है क्या, नहीं, हाँ इसके लिए जरूरत लगी। वाइल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, तो जो दूसरी इक्वेशन है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो डी क्या होगा, 0। डी मतलब b² -4ac मतलब 4q बराबर 0। उसमें से भी दिया है, p अपने को पता है 7 -7 है, तो आएगा 49 बराबर कितना आएगा, ये 4q। तो q आ गया 49/4, तो अपना आंसर सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 49 का, इसका इसका तो सी था, इसका भी सी है। If the roots of the quadratic equation this are this and this, then the value of, वाह भाई, तो हमें रूट्स पता है तो हम क्यू भी निकाल सकते हैं, पी भी निकाल सकते हैं, दोनों तो इजी है। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90। तो सम ऑफ रूट्स, जो पी आएगा, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा को मैं tan 30 मानूंगा और बीटा को मैं tan 15 मानूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो तो माइनस भी होगा फिर। तो मतलब यहां से हमें पता चला कि tan 30 और tan 15, इन दोनों का सम कितना है, -p। ठीक है, और दूसरा tan, इनका प्रोडक्ट tan 30 × tan 15, ये है क्यू। क्वेश्चन में दिया है, हमें निकालना है 2 + q - p। हम हमें वैल्यू भी पता है, वैसे भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को p का वैल्यू भी निकालना है, ये क्या है, हाँ, उससे थोड़ा बहुत ही गंदा आएगा। tan 15 क्या होता है, √2 - 1, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। वैसे भी कर सकते हैं, या तो वो tan 45 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है tan 45 अगर फॉर्मूला लिखूंगा मैं, कितना आएगा, tan 30 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस, इसका सट्टा भी है लेकिन अभी ठीक है, ऐसे ही करेंगे, tan 15। तो यहाँ पे tan 45 1 होता है, इज इक्वल टू tan 30 प्लस tan 15, उसकी जगह मैं माइनस भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस tan 30 और tan 15 उसकी जगह क्यों लिख सकता हूँ। नॉर्मली भी कर सकते हैं बट ऐसा अभी इजी लग रहा है। नॉर्मल वैल्यू भी पुट करोगे लेकिन उसमें कैलकुलेशन जाएगा। तो ये आएगा 1 - q बराबर -p। तो अगर मैं सबको एक साइड, ऑप्शन कैसे है, हमें निकालना है ऐसा। ठीक है, हमें क्यू प्लस में चाहिए, पी माइनस में चाहिए, तो क्यू को इधर लिया, ये इधर लिया, +1। हाँ, तो अपने को चाहिए q - p चाहिए अपने को, तो q - p आ गया 1 बराबर, लेकिन अपने को चाहिए 2 + q - p, तो 2 + 1 आएगा आंसर 3। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 90 भी हो गया, 90 का आंसर 3 है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 91। 91 क्वेश्चन। वही e पावर साइन एक्स को टी मानेंगे, खत्म। ई पावर साइन 90, क्वेश्चन नंबर 91। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, इसमें हम ई पावर साइन एक्स को टी मानते हैं। तो ये आएगा ई पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, या -4 इज इक्वल टू 0। तो ई पावर साइन एक्स को हम टी मानेंगे। तो टी मानते तो ये आएगा टी माइनस, ये आएगा 1/t, ये आएगा -4 इज इक्वल टू 0। भाई हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हट ही जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ई पावर साइन एक्स। तो ये बनेगा टी स्क्वायर -4t, टी स्क्वायर -4t -1 इज इक्वल टू 0। तो हम रूट निकालेंगे, फिर टी का वैल्यू निकालेंगे। तो टी क्या आएगा इधर से? टी फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो अपने को फॉर्मूला मेथड यूज करना है। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो 16 बी स्क्वायर -4ac तो +4 हो जाएगा 20/2। तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा टी बराबर 2 प्लस माइनस 20 को भी लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू, तो आएगा 2 कट जाएगा, तो √5 आएगा। 2 प्लस माइनस √5। अभी देखो, अगर मैंने एक, मेरे पास टी का वैल्यू 2 है, टी का पावर मतलब ई का पावर साइन एक्स, ई पावर साइन एक्स या तो 2 माइनस √5, या और ई पावर साइन एक्स किसके बराबर है? 2 प्लस √5, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। अभी हमें पता है ई जो है ना, ई ये पॉजिटिव, ई पावर साइन एक्स, ये तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि ई पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। मतलब ऊपर कुछ भी हो, खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आने वाला है। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, √5 क्या होता है? -2.1, ये -√5 -2.2 रहता है, ऐसा कुछ। तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई पावर साइन एक्स क्या है? हमेशा पॉजिटिव, तो इधर से कुछ नहीं आएगा। दूसरी चीज, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू है ना, वो ई आएगा, e पावर 1 मतलब 2.7 कुछ। लेकिन जो 2 प्लस √5 है, ये तो अलग ही ये तो बहुत ज्यादा है। 2.7 से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 2 है, ये 2.4 समथिंग है। तो ये नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? इसका सोल्यूशन नहीं है, तो ए आएगा 91। 91 का ए ही आएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 92। 92 क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, देन बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 1। और इसका स्टेटमेंट 2 है, इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स देन द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। 92। 92 ये तो पहले हमें अगर विदाउट सॉल्व करके हम बताएंगे इसका आंसर। रूट पहला, जो पहला स्टेटमेंट 1 है, उसने बोला इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब फॉर एग्जांपल या 1 और 2 है, तब ये हो सकता है बी स्क्वायर -4 से 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो दूसरा है, इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स देन द रूट्स ऑफ दिस आर रियल डिस्टिंक्ट, अभी बात यहाँ पे चल रही है ऑड इंटीजर्स की, जो रीजन है इसका। लेकिन स्टेटमेंट तो अलग ही था, वो था टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की। तो पहला, ये तो पक्का है कि नॉट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ये तो पक्का है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? पहला तो स्टेटमेंट फॉल्स, ये तो छोड़ दो इसको। लेकिन ये तो पक्का है। हाँ, स्टेटमेंट 1 ट्रू है क्या? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस, हम चेक करेंगे स्टेटमेंट 1, बस एक ही चेक करेंगे, हम दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रू करेंगे तो फिर ये ट्रू ही होगा, ये वाला ठीक होगा, डी वाला। मैं एक रूट मान लेता हूँ 1, दूसरा रूट मान लेता हूँ 2। इक्वेशन क्या बनेगा? x-1 x-2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x² -3x+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं अभी b² 4/1 के बराबर है क्या? ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जल्दी करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें a1 है, b अपना कितना है? 9 -3, और c अपना कितना है? 2। अभी करो b² -4c देखते हैं। तो b² कितना आएगा? b² आएगा 9, और 4c कितना आएगा?
4 से आएगा 8, हाँ आ रहा है ना। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4 सी कितना आ रहा है, 1 के बराबर। तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और ये करेक्ट भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये वाला इसलिए गलत हो गया, बाकी ये फॉल्स है, ये तो आता ही नहीं पहले। 92 का फिर आंसर क्या है, डी। फिर अपने पास है 93, वापस से 93 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, इफ ए इक्वेशन दिस हैव ए कॉमन रूट। हम्म, बराबर, ठीक है। हम करेंगे इधर क्वेश्चन 93। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, अगर इनके पीछे कॉमन रूट है तो उनने बोला कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा कंडीशन कुछ तो, देन द अदर रूट सेटिस्फाई द कंडीशन दिस। हम इसको वैल्यू भी ले सकते, पहले हम ऐसे प्रूव करेंगे बस। मैं दोनों को माइनस करूंगा, जब भी हमें कॉमन रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम करते उसके बाद माइनस करते। माइनस कर दिया तो इधर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कट, इधर आएगा बी माइनस सी, साथ में बचेगा एक्स, इधर आएगा ए सी माइनस ए बी, तो ए कॉमन आएगा, बचेगा सी माइनस बी बराबर 0। तो इधर से एक्स कितना आएगा, उसको उधर लूंगा तो बी माइनस सी, साथ में ए है, नीचे बी माइनस सी है, आएगा ए के बराबर, तो एक्स बराबर ए। एक्स बराबर ए, इसका इसका कॉमन रूट है, तो दूसरा रूट निकाल सकता हूँ मैं। अगर एक्स बराबर ए कॉमन रूट है तो मैं एक्स को किसी भी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। मान लेते मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी बराबर 0, ठीक। तो ए कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। हाँ, इसमें क्या होगा अभी, यहाँ तो ए 0 हो सकता है और यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स का क्वेश्चन भी नहीं है, हम बोलेंगे भाई तब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये तो ए तो कोई भी नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तो ए 0 है, यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है। अभी क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस have a common if x square plus bx plus ca and this have a common root, then a plus b plus c is equal to 0। a plus b plus 0 ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ a is equal to 0 भी हो सकता है, तो मतलब दो केस पॉसिबल है। इसके मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यही होगा a plus b plus c 0, a भी 0 हो सकता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज, मतलब स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ये भी हो सकता है 0 लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका भी आंसर डी है। हमें बस इसमें यही चेक करना था बस। देखो हमें ये पता चल गया कि ए 0, तो पहला स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चला कि ए 0 भी हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी 0 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ, पहला जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, वो स्टेटमेंट हम देख ही नहीं रहे, हम बस स्टेटमेंट 2 देख रहे हैं। तो स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बराबर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसमें और इसमें क्या फर्क है, 93, दूसरे और इसमें क्या फर्क है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए, ये बराबर, ये तो ठीक ही है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ रहा है, दूसरे वाले में बोल रहा है कि नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन हमें क्या आ रहा है कि अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 के बराबर है और इनके बीच में कॉमन है, देन ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, 0 ही होगा। बट ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी ए 0 के बराबर, तो क्वेश्चन में बताना था ये कि ए 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब अपना बी आंसर आ रहा है। अभी वो देन बोल रहे हैं ना, देन ए प्लस बी प्लस सी 0 0, ये गलत है, ए 0 भी हो सकता है। अगर ए 0 हो गया और ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है तब भी वो चलेगा, तो आंसर भी आएगा। फिर अपना 94,
the value of lambda 4 is the sum of the squares of the roots of the quadratic. This has least value. तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे पहले. ठीक है, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्बडा साथ में एक्स प्लस 2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0. ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्बडा एक्स प्लस 2 माइनस लैम्बडा. ठीक. हमें पूछा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स क्या चाहिए, मिनिमम. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने को चाहिए मिनिमम. ठीक है, अल्फा हम निकाल सकते हैं. क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये अपने को चाहिए मिनिमम. अल्फा प्लस बीटा हम निकाल ही सकते हैं. कितना है वो, 3 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर. मार ये अच्छे से नहीं चलता. माइनस 2 अल्फा बीटा. तो 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है अपने पास, 2 माइनस लैम्बडा. इसको अपने को मिनिमम चाहिए, फंक्शन है कुछ. ठीक है, मिनिमाइज करना है इसको. तो ये कितना आएगा अपने पास, 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्बडा स्क्वायर और क्या आएगा माइनस 6 लैम्बडा. ये कितना आएगा 4 प्लस 2 लैम्बडा. तो 2 टू माइनस 4 तो प्लस लैम्बडा. तो क्या आएगा फाइनल आंसर, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा. तो आएगा 4 लैम्बडा और आएगा प्लस 5. फाइनल जो अपने पास ये बचा, ये कितना आया, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस 5. इसको हमें करना है मिनिमाइज. मिनिमाइज कहाँ पे मिनिमम वैल्यू होता है इसका, माइनस बी बाई टू ए पे. मिनिमम वैल्यू निकालना है कि कहाँ पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सो दैट. तो मिनिमम वैल्यू निकालना है अपने को. कहाँ पे होता है, माइनस बी बाई टू ए मिनिमम वैल्यू होता है. बराबर. तो माइनस बी बाई टू ए कितना आएगा बताओ, माइनस बी. माइनस बी अपना वो अपना बी अपना -4 है अपॉन 2 आएगा. तो कितना आएगा आंसर, पुट कर दो, आएगा 2 आंसर. तो लेमड़ा का आंसर 2 आना चाहिए. इजी है. जब भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो क्या करने का, माइनस कहाँ पे होता है, माइनस बी बाई टू ए पे. और कितना होता है, माइनस डी स्क्वायर बाई 4 ए, माइनस डी बाई 4 ए. तो अगर ए मैं लिखता हूँ इधर, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर ए ग्रेटर देन 0 है, मिन वैल्यू होता है माइनस बी बाई टू ए पे कितना होता है, माइनस डी बाई 4 ए से इंफिनिटी. ये वाई का वैल्यू. और कहाँ पे होता है ये, माइनस बी बाई टू ए पे. और अगर ए लेस देन 0 है तब होता है मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू होता है माइनस डी बाई 4 ए. मिनिमम लिखते हैं बस. और मिनिमम होता है माइनस इनफिनिट बस. और कहाँ पे आता है, वही माइनस बी बाई 4 ए पे आता है. खत्म. फिर उसके बाद नेक्स्ट 95. If one root of the quadratic equation this is the cube of the other, then the value of k is. वही वाला, वैसे ही काम करने का. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालने का, आ जाएगा उधर से आंसर. तो अगर एक अल्फा है दूसरा अल्फा क्यूब है, तो इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं इधर, 81 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 256 इज इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन में बोला है एक अल्फा है दूसरा अल्फा क्यूब है, तो अल्फा पावर 4 कितना आएगा, 256/81. देन द वैल्यू ऑफ के. ये तो हो गया. अगर अल्फा पावर, ये तो 256 किसका पावर, 4 का पावर 4, और ये 3 का पावर 4 है, तो 4/3 आ गया. अल्फा आ गया 4/3. तो अल्फा को उधर पुट कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर ये रूट है ना, अल्फा भी इसका रूट है, तो उसको पुट कर दो इधर. तो कितना आएगा, 81 एक्स स्क्वायर मतलब 16/9 प्लस के एक्स अल्फा की जगह 4/3 प्लस 256 इज इक्वल टू 0. ये अगर 9 1 जार 9 9 जार 89, तो 144. 3 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 3 प्लस, अरे ये तो अलग है. 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 क्या आएगा, हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई, 256 इंटू 3
into 3 18 16 बराबर इज इक्वल टू 0। तो इधर से आएगा 4k। हम 16 से डिवाइड क्यों नहीं किया? ठीक है हो जाए, ठीक है हो जाने दो। 4 से डिवाइड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इजी हो जाएगा। 4 कट हुआ, 4 4 16, 464 आएगा इधर, बस इजी हो जाएगा ऐसे। तो 9 4 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 प्लस ये आएगा के, और ये आएगा 64 इंटू 3, 6 132 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो के का वैल्यू कितना आएगा? इन दोनों का सम करेंगे तो 300 और 132, 9 4 36 इंटू 3। ऑप्शन कितना है ऑप्शन इसमें? -300 -100। तो ठीक है ना, हमने गलत किया क्या? अल्फा कितना है? 4/3। 4/3 को वापस पुट किया तो 81 इंटू 4/3, तो 16/9। 4/3 प्लस 256। क्वेश्चन में 256 था क्या? हाँ। फिर के अगर अभी अल्फा अगर उसका रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा की जगह हमने 4/3 पुट किया, 4/16/9, 9 4 36। ऑप्शन में क्या क्या है? 132 माइनस नहीं, कोई नहीं है। इसे हमने गलत किया क्या लास्ट में उधर? 4/3, 3 से मल्टीप्लाई, 9 9 89, 9 4 36, 36 इंटू 3 108 प्लस के प्लस 16। अरे ये वाला मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इधर, ये 3 है तो कितना आएगा? 192 बराबर। तो के आएगा -300। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 96। क्या बोला है? 95 हो गया। 96 द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विद द सम ऑफ, ऐसा, ठीक है। अपने को 7 डिजिट का नंबर बनाना चाहिए जिसमें सम आना चाहिए 10। तो हम क्या ले सकते हैं? पहले 1 1 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 लेंगे फॉर एग्जाम्पल पहले। तो 6 आगे फिर में अगर 3 होगा तो 9 ही बनेगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 6 तो नहीं ले सकते। 5 लिया तो भी और 2 का सम 5 आना चाहिए, तो 2 और 3 ले लिया। केस 1। दूसरा केस क्या बनेगा? तो इसके लिए पॉसिबिलिटी 7 फैक्टोरियल, 7 बंदे हैं, सो 1 इज रिपीटिंग 5 टाइम, तो 5 फैक्टोरियल। आंसर आएगा 7 इंटू 6 कितना है? 42। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा केस 1 1 एक 4 बार लेंगे, 4 बार 1, तो 2 2 2 6 बराबर। ये भी आ रहा है 10 इनका सम। तो आंसर होगा इसका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो कट ही हो जाएगा, आएगा 3 फैक्टोरियल। ये और एक कट हो गया, आ गया 35। 35 प्लस 42 कितना है? 77 तो आ गया। तो ये आंसर हो सकता है। ये दोनों गलत हो गए, अभी ये इन दोनों में से आंसर हो सकता है। हम अभी 3 1 लेंगे, देखते होगा क्या पॉसिबल। 3 1, फिर इधर 3, मतलब इनका सम 3, अभी 7 बनाना पड़ेगा। 4 लेके 7 बनाना पड़ेगा, तो 3 लिया, 2 नहीं बनेगा 7, 2 2 3। 7 तो आ रहा था लेकिन एक और बंदा चाहिए, उसके लिए 1 चाहिए, तो वो ये वाला केस वापस से रिपीट होगा, तो मतलब 77 ही बनेंगे। तो अपना आंसर 77 है 96 का। फिर क्वेश्चन नंबर 97। The total number of ways in which the 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons of, so that each person gets at least one. तो person 1, person 2, person 3, मतलब सबको एटलीस्ट एक मिलना चाहिए। तो मतलब ये तो दो भी मिलेगा तब भी चलेगा। ठीक है। ये तो ये फंक्शन है तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें निकालना होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, मतलब ये सब रिलेशन, मतलब इसमें होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अपने को पता है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। तो क्या करने का?
3C0 से जो भी वहां पे R रहता है, अगर R एलिमेंट है उधर उधर से स्टार्ट करने का। 3C0 इधर आता है, फिर 3 इधर आता है 5, पहले साइन प्लस फिर माइनस, फिर आता है 3C1, अभी 2 पावर 5 आएगा, एक कम करने का, फिर प्लस, फिर आएगा 3C2, फिर दो में से एक कम करने का 1 पावर 5, उसके नेक्स्ट वाला तो जीरो आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आएगा 243 माइनस 2 पावर 32 तो 96 प्लस 3 तो 3 आएगा, तो 243 प्लस 46 आएगा आंसर 150। इसका 150, इसको 77, इसको -300, इसका क्या आया था, कुछ तो आया था। इसका आंसर क्या आया था इसका, अल्फा 4/3 है। क्वेश्चन नंबर 95, 94 का आंसर 2 है। सो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 3 5 6 7 8 विदाउट रिपीटिशन। तो स्टार्ट हमें 6 से करना पड़ेगा। 98, अगर बोला ग्रेटर देन 6000 तो 1 2 3 4 बंदे, यहाँ पे मैं 6 रख सकता हूँ, उससे देखूंगा कितने नंबर बनेंगे। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, बस जितने भी नंबर बनेंगे वो सब 6000 से बड़े होंगे। हाँ, तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ कितने केस आ सकते हैं बताओ। 6, तो 6 को मैंने फिक्स किया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मेरे पास बचेंगे नंबर 3 5 7 8, तो 4 बंदे। इधर कितने बंदे बचेंगे, 3। इधर कितने बचेंगे, 2। ठीक है, क्योंकि आपने को 600 से बड़े ही नंबर चाहिए। फिर 1 2 3 4 5 6, सेम 7 के साथ भी, 7 के साथ भी 4 3 2, कुछ भी रहने था, हाँ, और इसके भी 4 3 2, तो 24 प्लस 24 प्लस 24, ये अपना आंसर आ गया। तो 24 24 24 कितना आएगा, 72। ऑप्शन डी। फिर इन हाउ मेनी वेज कैन 7 men sit around a round table such that no two women sit together। तो वुमेन की बात बोली है, तो हम पहले मैन को बिठा देंगे, 7 men। तो 7 men का बिठाने का तरीका, अभी सर्कुलर में है तो 6 फैक्टोरियल बराबर, तो मैंने बिठा दिया मैन 1, मैन 2, मैन M4 M5 M6 M7, 7 men है तो उनके तो 6 फैक्टोरियल वेज तो आ गए क्योंकि सर्कुलर है। अभी आपने को देखना गैप्स कितने आएंगे, उसमें से फिर वुमेन को बिठाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितने वुमेन को बिठाना पड़ेगा, 7 में तो 7 से 7, तो पी भी कर सकता हूँ, 7 P 7 उनका अरेंजमेंट। तो वो क्या होता है, 7 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अभी उसमें -1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम -1 तभी आता है जब हम स्टार्ट में करते हैं, स्टार्ट में जैसे मैन को बिठाना था, उस टाइम पे -1 आएगा, क्योंकि उस टाइम पे वो सर्कुलर रहता है पूरा। बाद में इनकी वुमेन को बिठाने से -1 नहीं करेंगे हम। तो 7 P 7 मतलब 7 फैक्टोरियल, तो अपना आंसर आ गया डी पार्ट। फिर नेक्स्ट 100 नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 विच कैन बी फॉर्म विद डिजिट। ये तो सेम क्वेश्चन है वैसे ही, जैसा क्वेश्चन 98 है वैसे ही ये भी है सेम। 101, कौन सा, नहीं 101 नहीं है, 100 वाला क्वेश्चन सेम करने का। उसके बाद 101, 20 persons आर इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे हैड द होस्ट बी सीटेड एट सर्कुलर टेबल इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन आर टू बी सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। ठीक है, तो कितने बंदे टोटल, 20। लेकिन कंडीशन क्या बोला है, होस्ट फॉर एग्जाम्पल होस्ट इधर है, इसके साइड में 2 बंदे रहना ही चाहिए, पर्टिकुलर बंस, तो पर्टिकुलर बंदे, तो उसको मैं बंदों का नाम दूंगा M1, मतलब फिक्स रहने चाहिए। तो इन पूरे को मैं एक बैग में रखूंगा, फिर पूरा इनको हम रोटेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इनको हमें एक यूनिट मानना है, मतलब
M1 होस्ट और M2, इनको हमें एक ही यूनिट मानना पड़ेगा। तो टोटल बंदे कितने थे पहले? 20। अभी हमने 3 बंदों को एक ही मान लिया, तो अभी कितने बंदे हो गए टोटल? 18। बराबर है ना? और अंदर में इनका अरेंजमेंट हो सकता है बस। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है सीन है, जितने भी ये बंदे हैं बाकी बंदे, उनको तो वैसे ही उनको वैसे ही हमने रखा बस। होस्ट M1 और M2, उनको हमने एक यूनिट माना। टोटल बंदे कितने थे यहाँ पे? 20। तो इन तीनों को हमने एक माना। अभी टोटल बंदे कितने आ गए अभी? 18 बस। और अंदर इन दोनों का अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या हम? इन दोनों का अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो आएगा 2 फैक्टोरियल। तो जो 101 का आंसर आएगा, 101 का आंसर कितना आएगा अभी? 18 फैक्टोरियल बट इंटू साथ में इंटरनल अरेंजमेंट कितना आएगा? वो 2 फैक्टोरियल। तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। 101 का ये वाला आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 102। log 3x, ये बोला कि ये एपी में 102 वाले में। log 3x, log 32 ये एपी में है, तो हमें बताना है एक्स का वैल्यू। हम पुट भी कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी पुट करो। एक एक में ऑप्शन 2 है, 3 है, इधर 2 3 है, तो हम 3 पुट कर लेते, देखते हैं। तो log यहाँ पे 32, या सीधा ही हम करेंगे। अगर A, B, C एपी में है, तो बी किसके बराबर होता है? A+C। 2B बराबर A+C, हम ये यूज करेंगे जल्दी। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें 3 पुट किया, फिर अपने को 2 भी चेक करना पड़ेगा, इसलिए सीधा हम यही सॉल्व करेंगे। तो 2B मतलब 2B अपने पास है log 3 2 4x-5 इज इक्वल टू A+C। तो ये आएगा log ये 3A2 प्लस log ये 2 4x-7/2। इस 2 को ऊपर लेंगे तो क्या आएगा? 2 4x-5 का होल स्क्वायर। ठीक है। बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ log इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा? 2 4x, 2 × 2 4x माइनस, वो क्या था वहां पे? 7/2 था क्या? हाँ। तो 2 और 2 कट हो जाएगा, तो -7 आएगा। तो यहाँ पे log को हटा दूंगा मैं दोनों साइड। तो ये आएगा। हाँ, इधर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 पुट किया, 3 पुट करने पे ये 8 आएगा। अगर मैंने x तो 3 पुट किया, तो ये आएगा 2 पावर 3 8 -5 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा। इधर देखते हैं 9 बन रहा है क्या? ये आएगा 2 × 2 पावर 3 -7। तो ये बनेगा 16 - 7, ये भी 9 आ रहा है। तो या तो ऑप्शन डी है, या तो सी है, या तो डी है, या तो ये दोनों गलत हो गए। हाँ, अभी 3 है, तो 2 नहीं होगा, फिर एक ही आएगा ना आंसर। दो आंसर नहीं हो सकते, तो अपना आंसर आ गया 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। 103 में क्या क्वेश्चन है? इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसके बराबर है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ 1 दिया है 3 के बराबर, और समेशन एफ ऑफ एक्स दिया है 120 के बराबर, 1 से लेके n तक। हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू कितना है? बराबर। पहले हमें तो अपने को फंक्शन देखना है कौन सा है। ये तो कौन सा फंक्शन दिख रहा है अपने को? ये एक्सपोनेंशियल ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल में ऐसा होता है। a पावर x प्लस वाई किसके बराबर होता है? a पावर x
प्लस ए पावर वाई, उसमें ऐसा होता है इंटू इंटू। हाँ, ये हम जनरली पढ़ते भी है फंक्शन में। तो मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स को फिर ए पावर एक्स मान सकते हैं ऐसे। लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है कि एफ ऑफ वन वन के बराबर है, थ्री के बराबर है। तो एफ ऑफ वन इसके बराबर है ए पावर वन, थ्री के बराबर है, तो ए अपना थ्री है, तो अपना फंक्शन आ गया। अभी इजी है, एफ ऑफ एक्स आ गया थ्री पावर एक्स। और सम बोला है वन से एन तक, मतलब ऐसा समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन तक, थ्री पावर एक्स ये दिया है 120। अगर 120 दिया है तो ऐसा आएगा, हमें निकालना है किसका एन का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है। जैसे थ्री पावर वन प्लस थ्री पावर टू, थ्री पावर थ्री, कब आएगा ये क्या 120, देखते हैं 120 चार तक ही आएगा, क्योंकि उसके बाद तो ज्यादा हो जाएगा। अगर थ्री पावर फाइव लिया वो तो 243 होता है। चार तक अगर होगा तो ये आंसर है, वरना तो नन ऑफ दीज है। ये आएगा इसका आंसर 81। देखते हैं इसका आंसर 27, इसका आंसर 9, इसका आंसर 3। 27 प्लस 3 30, 81 प्लस 9 90, तो 120 आ रहा है, तो चार आएगा इसका आंसर। हाँ, जल्दी, द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ऐसे नंबर जो 2 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो बताओ पहले 1 से लेके 100 तक जो 2 से डिवाइड होते हैं वो लिखते हैं हम। कौन से डिवाइड हो रहे हैं, दो, और कौन से हो रहे हैं, ये दो है, इवन मल्टीपल चार है, छह है, आठ है, 10 से 12 ऐसे हो रहे हैं, लास्ट में आएगा 100। और चार से, पांच से तो आएगा, पांच आएगा, 10 आएगा, 25, 15 आएगा, ऐसे ही आएगा 100। लेकिन इसमें ऐसे बंदे आएंगे जो कॉमन भी आएंगे, मतलब 10 के मल्टीपल्स। तो मैं निकालूंगा किसके किसका सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ टू, मल्टीपल्स ऑफ टू, शॉर्ट में लिखता हूँ मल्टीपल्स ऑफ टू प्लस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फाइव माइनस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10। तो सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ टू निकाल सकता हूँ मैं, इवन नंबर है सब। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। तो उनका सम कितना है, या सीधा ये बंदे देखो, इनका सम हम निकाल सकते हैं सीधा, एन बाई टू ए प्लस एल। तो 50 बंदे हैं, क्योंकि 50 इवन नंबर है, और आएगा 102। 100 प्लस दो 102, या तो वैसे भी कह सकता हूँ एन इंटू एन प्लस वन। एन बाई टू ए प्लस एल बराबर 50/2 इंटू ए प्लस एल। और वैसे ही फॉर्मूला है इनका, एन इंटू एन प्लस वन। वो आएगा कितना आएगा ये, 50 इंटू 102, तो ये आएगा 51। तो जीरो, फाइव वन जार फाइव, फाइव फाइव जार 25, ठीक है। फिर पांच दस इनका सम वो भी निकाल सकते हैं, कितने बंदे हैं, 20, 20 बंदे हैं। ये तो सम ऑफ टू आ गया, सम ऑफ टू आ गया। अब इस मल्टीपल्स ऑफ फाइव का निकालेंगे, कितना आएगा, एन बाई टू, तो 20/2 ए प्लस एल, 5 प्लस 100, तो जीरो जीरो कट, तो 2 टाइम्स 105, तो आएगा 210। ठीक है, एन बाई टू 20, ये टू है इधर टू, तो 10 इंटू 105, 1050। अभी हम निकालेंगे सम किसका, मल्टीपल्स ऑफ 10 का। वो आएगा 10 प्लस 20, ऐसे ही चलेगा 100 तक। कितना आएगा, 10 बंदे हैं, ए प्लस एल, 10 प्लस 100, तो ये 5 आएगा, 5 इंटू 110, 550। अभी दो, पहले दोनों को ऐड करना है फिर माइनस करना है, आगे आंसर अपना। तो 104, 104 का आंसर क्या आएगा फिर, उन दोनों को सम करने के बाद इसको माइनस 2550 प्लस 1050 माइनस 5550, कितना आएगा, 2550 प्लस 1050 माइनस 550। इसमें से 550 गया, बचेगा 2000,
दो 3000 तो 3050 अपना आंसर है। अगर a पावर x b पावर x और c पावर z बराबर है a b c आर इन जीपी, देन x y z आर इन 105। हम के टर्म में निकाल सकते हैं बस, मतलब ये देखो, हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम के बराबर लेते हैं हम इक्वल रेशियोज। ए पावर वाई बी पावर बराबर के, तो इधर से ए कितना आएगा, के पावर 1/x, बी कितना आएगा, के पावर 1/y, और सी कितना आएगा, कितना आएगा, के पावर 1/z। तो क्वेश्चन में बोला है कि क्या ए बी सी जीपी में शायद, हाँ। तो अगर ए बी सी जीपी में है तो हमें पता है जीपी में होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी स्क्वायर मतलब के पावर 2, तो 2/y बराबर के पावर ए का मतलब 1/x, और उसका मतलब के पावर, तो प्लस हो जाएगा वो। अभी बेस सेम है तो पावर को सेम होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/y बराबर 1/x, 1/z प्लस, ये लग रहा है एपी में है। कौन सी एपी में है, मतलब ऐसे में बोल सकता हूँ 1/x, 1/y और 1/z, ये तो एपी में है। अगर ये एपी में है तो इनके उल्टे वो होंगे एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तो हो गया। द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 एंड द कॉमन, ये तो कितनी बार, ये तो सट्टा है, 9 और 16, 106। बट हम एक प्रूव भी कर सकते हैं। आपको क्या करने का, इसमें क्या करने का, ए लेने का कितना, 120, और डी लेने का 5, और फिर एस एन का फॉर्मूला लगाने का। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन अपने को नहीं पता, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, क्या होता है, n-2 इंटू 180। इसमें एन की जगह पुट करने का, खत्म। ए भी पता है, डी भी पता है, तो कितना आते हैं, 9 और 16, ये वाला। इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 107। बोले थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म का मतलब AR²। AR² 4 है, हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, T1 T2 T3 T4 T5। जो पहले पूछा गया है ना वो सब लिखने का, बाद में देखने का कि वो यूज हो रहा है कि नहीं, हमें इस पे ध्यान देना है जो गिवन है। तो T1 अपना ए है, T2 अपना AR है, T3 अपना AR², T4 अपना AR³ T5 अपना AR4। तो ए 1 2 3 4 5 ये आ गए। आर कितने आए, 4 3 7 2 9 10, R पावर 10, और ये आ गए 5। लेकिन मेरे को AR² का यूज करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं AR² का पावर क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना ही पड़ेगा। कॉमन कर लिया। तो AR² अपने को पता है 4, तो 4 पावर 5, ये तो पता ही है 1024। तो ऑप्शन है क्या, हाँ, 4 पावर 5। फिर 9 टर्म नॉन नॉन जीरो एपी 0, देन 49 टर्म, ये भी 108 भी इजी है। 19th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो एपी 0, तो 9th टर्म मतलब T19 0 है, तो A प्लस 18D कितना है, 0 है। तो A प्लस 18D 0 है, तो A बराबर -18D हो गया। इसका हम यूज करेंगे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। 49th अपॉन 29th, 49th मतलब T49 अपॉन T29, T49 मतलब A प्लस 48D, इसका मतलब A प्लस 28D। ए की जगह -18 रख देने का, तो -18D प्लस 48D, -18D प्लस 28D। 18, 48 में से 18 तो 30D आएगा, नीचे आएगा 10D, डी डी कट, तो आंसर है 3:1। तो अपना आंसर डी है 108 का भी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कौन सा क्वेश्चन है, बोला विल बी रियल इफ, रियल मतलब रियल नंबर आना चाहिए। तो 109 का तो जब भी साइन थीटा 0 गई तो 109 ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो। 109 बोला है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रियल पार्ट, तो मतलब इसको 0 ही होना पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट को। ये वाला पार्ट तब 0 होगा जब साइन थीटा 0 होता है, साइन थीटा होता है 0 n पाई पे। तो अपना आंसर आ गया डी।
2n पाई भी 0 होगा, लेकिन अपने को पूरा अगर सोल्यूशन सेट चाहिए तो n पाई होगा, थीटा को n पाई होना पड़ेगा। n पाई में 2n पाई आएगा, लेकिन 2n पाई में n पाई नहीं आएगा। 110, 110 का क्या है, 3 6 9 12। देखो अगर 3 6 9 12 अपने को रिफ्लेक्सिव देखना है पहले, तो 3 का पेयर, 6 का पेयर, सबका पेयर होना ही चाहिए। तो 3 का है, 6 का है, 9 का है, 12 का है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ तो ऑप्शन डी है, लेकिन सब में रिफ्लेक्ट कुछ फायदा नहीं हुआ इससे, रिफ्लेक्सिव सब में है, ये चेक करने की जरूरत नहीं थी। सिमेट्रिक देखेंगे, अगर 6, 12 है तो 12, 6 है क्या, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अभी ट्रांजिटिव देखेंगे, 6, 12 है, 12, 12 है और 6, 12 है, ठीक है। 3, 9 है, 9, है, ये भी ठीक है। इधर 3, 3 है, 3, 9 है, तो 3, 9 भी है, सभी है इसमें। तो अगर इसमें क्या हो रहा है, अगर a, b मैं देख रहा हूँ, a, b है, फिर b, c भी है, चेक कर रहा हूँ मैं, तो a, c भी है, इसमें आ रहा है। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं एलिमेंट इसमें जो नहीं आ रहा है। 3, 9, 3, 9 है, 9, 9 है, 3, 9 आ रहा है। 3, 12 और कैसे देखते, 6, 12, 3 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, तो 3, 3 ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। वैसे भी 6, 12 का अगर पेयर ही नहीं है तो खत्म, ट्रांजिटिव हो गया वो। तो आंसर डी तो रिफ्लेक्स तो है सब में, बस सिमेट्रिक नहीं था, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। फिर अपने पास बचते दो ऑप्शन, या तो रिफ्लेक्सिव या तो ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव भी, तो ये ट्रांजिटिव भी आ रहा है। 111, 111 का क्या है, a-b < 1, तो मैं रिफ्लेक्सिव के लिए बी को हम क्या पुट करते हैं वापस से, a < 1, तो मतलब 0 लेसर इक्वल टू 1, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। इसमें ऐसा एक ही ऑप्शन है जो रिफ्लेक्सिव वाला है, बाकी ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, तो आंसर आ गया अपना, चेक करने की, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दूसरा भी ठीक ही था, मैं ए की जगह बी लिखूंगा, बी की जगह ए, वो भी लेसर इक्वल टू 1 है क्योंकि मॉड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 112, हमें निकालना है a×b, तो 1a, अच्छा ये दिया है, सब ए दिया है, बी दिया है, और मैपिंग सही है, तो हमें निकालते हैं a×b इस, a×b क्या हो सकता है, ठीक है। A1 ए है, 1 बी, ये भी चलेगा, उसमें a×b होगा, 2a, 2b, 3a, चलेगा ना सब पूरे फुल, तो a×b पूछा है हमें, तो चलेगा, ए तो इजी है, ए तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, इफ आर इज अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए इज इक्वल टू दिस, ए अपने पास 1 2 3 4 है, बी अपने पास 1 3 5 है, हाँ बराबर। हमें क्या निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड आर ऑफ आर इनवर्स, तो हम आर इनवर्स पहले निकाल सकते हैं। तो पहले लेस देन वाला साइन, ए इज लेस देन बी, तो ए इज लेस देन वाले बी में क्या आएगा, आर में, तो 1 1 के साथ आएगा 3, चलो चलेगा। फिर दूसरा 1 के साथ 3, 2 के साथ, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5 भी आएगा, वो भी चलेगा। फिर 2 के साथ 3 और 2 के साथ 5, ये भी चलेगा, हो गया ये। फिर 3 के साथ, 5 चलेगा बस, और 4 के साथ 5 चलेगा, हाँ ये आर में है। आर इज इक्वल टू 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 4 5 बराबर। हमें क्या निकालना है अभी, आर इनवर्स, तो आर इनवर्स का उल्टा हो गया, आर इनवर्स कितना आएगा, 3 1 3 1 5 1, आर इनवर्स मतलब वो पहला वाला दूसरे से बड़ा है, तो 5 1, और क्या आ सकता है, 3 2, और क्या आएगा, 5 2, 5 3, 5 4। हमें निकालना है आर और आर, ये देखो 3 1 इधर से आर, आर इनवर्स तो उल्टा करना होता है इसमें, तो R1 है, 1 से 3 है, तो 3 3 आएगा, एक 3 3 आएगा, तो बी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है, ये इसमें तो नहीं है।
ये तो दो खत्म हो गई। आर इनवर्स आर, अपने को आर और आर इनवर्स निकालना है। हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे थ्री उल्टा करते हैं, हम थ्री आर इनवर्स से स्टार्ट करते हैं। तो 3 1 1 3 तो 3 3 आ गया। 5 1 1 5 तो 5 5 आएगा, 5 5 भी है इसमें। 3 2 2 3 तो वैसे भी आ रहा था। हाँ, और कौन सा लेने का? 5 5 भी आ रहा है। तो अपने पास 5 5 भी आना, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचा। देखो इसमें 3 3 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन में जिसे जिसमें 3 3 5 5 आ रहा है, वो बी ऑप्शन है। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 113 का बी। फिर 101 1 4, द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन दिस। हमें बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16। किस किस, मतलब रिलेशन निकालना है। रिलेशन मतलब अपने को सारे एलिमेंट्स ऐसे निकालने हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या है, 1 1 सर्च से कर रहा है, क्या कर रहा है सर्च, 2 2 कर रहा है, 3 1 कर रहा है, 4 1, क्योंकि 4 का स्क्वायर आएगा 16 -1, वो सब कर रहे हैं। 2 2 ये सब कर रहे हैं सर्च। लेकिन हमें पूरा रिलेशन निकालना है। रिलेशन में और भी एलिमेंट्स आएंगे। और भी एलिमेंट्स मतलब, तो इसका है 1 1 4 का, 1 1 3 का बी, 1 1 4 का। उसमें पूरा रिलेशन अपने को निकालना है। जैसे मैं निकालता हूँ 1 2 भी उसमें आएगा, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वो तीनों में से किसी में भी नहीं है। तो आंसर डी आएगा। हमें ये नहीं देखना है कि कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें निकालना है पूरा रिलेशन। पूरे रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सब लिखने हैं। वो इन तीनों में से किसने किसी में ने भी नहीं लिखे। जैसे मैं 1 2 किसने नहीं लिखा इधर, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। मैं लूंगा 5 5, वो भी किसने नहीं लिया। ऐसे तो नन ऑफ दीज। If a relation is defined from 2 to 3, x is related to y as x is relatively prime to y, हमें निकालना है डोमेन। तो बताओ, 2 3 के साथ बराबर, 2 आएगा 7 के साथ, मतलब 2 तो आएगा, तो 2 डोमेन में आएगा। तो 115 जो है उसमें टू टू ऑप्शन है, तो ये गलत हो गया। फिर 3 भी प्राइम, 3 7 आएगा बराबर, वो 3 10 भी आएगा, मतलब 3 भी डोमेन में आएगा। तो बाकी तो सब में तो 3 है। हम कौन सा चेक करेंगे? 5 4 4 4 इज रिलेटिवली प्राइम टू 3, मतलब रिलेटिवली प्राइम का मतलब जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाए 1, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 4 और 3 के बीच में भी है, 5 और 3 के बीच में भी है, तो सारा ही है। तो 115 का ए आएगा। अभी 116, 116 अगर ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है, ए तो सीधा ही है, फॉर फॉर्मूला ही है 116 में। अगर ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं था कि बी सी के बराबर है, लेकिन अगर इनका इंटरसेक्शन भी बराबर दिया है, तो इसका क्या मतलब है? हमेशा ऐसे होता है, बी बराबर सी रहता है। तो इसका ऑप्शन सी आएगा 116 का। देन ये तो पी वाई क्यू ए वाला 117, देखो 117 में क्या बोला है, एक्स यूनियन वाई निकालो। 117 में क्या आएगा? हम देखेंगे पहले, देखने 1 डालने पे एक्स कितना आएगा, तो एक्स आएगा 1 - 1, तो 0 आएगा। एक्स को 1 डाला तो 4 पावर 1 -3 - 1 कितना आएगा? 0। तो 0 भी उसमें आएगा, जब 1 डालूंगा तो आंसर इधर 0 आ रहा है। 2 पुट करूंगा, एन तो नेचुरल नंबर है, 2 पुट करूंगा तो 16, 16 - 7 तो 9 आएगा। 3 पुट करूंगा 64 माइनस, 3 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 64 - 3 × 12 - 1, तो 64 - 13, 51 आ रहा है कुछ तो। ठीक है, इसमें 51 और सब भी आएगा। ठीक है, अभी हम वाई देखते हैं, वाई में क्या क्या आ रहा है। तो वाई में 9 के मल्टीपल्स आएंगे, क्योंकि 0 रखूंगा तो 0 तो नहीं रख सकता, 1 रखना पड़ेगा। तो 0 आएगा, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा तो 9 आएगा, फिर आएगा 18, फिर आएगा 27। मतलब ये 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो 9 के मल्टीपल, इसमें सारे 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। ये 51 कैसे है? 51 चेक करते हैं, 51 आ रहा है कि नहीं। जब मैं एन को 3 पुट करूंगा तो 4 का क्यूब -3 × 3 - 1, तो ये आएगा 64, 54 आ रहा है वो, क्योंकि वही आना चाहिए, क्योंकि वैसा ऑप्शन नहीं था। तो ये 9 के टेबल में आ रहे हैं सब,
इसमें कोई कोई जो है जो 9 के टेबल में आता है, तो y बड़ा है x से। अगर मैं दोनों का यूनियन निकालूंगा तो वो तो y आएगा क्योंकि वो बड़ा है। फिर A118, लेट ए एंड बी टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 elements रेस्पेक्टिवली। तो ए में 4 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो ए बी में 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर ए में कितने एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए कितना है अपने पास, एन ऑफ ए दो 4 है, एन ऑफ बी 2 है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, वो तो 8 ही होगा, बराबर। हाँ, और नंबर ऑफ सबसेट्स अगर तो 8 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ कितना आएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n मतलब 2 पावर 8, तो आएगा 256, बराबर, लिखने दो। फिर बोले कि एटलीस्ट, भाई एटलीस्ट दो तो चाहिए, दो चाहिए कि तीन, तीन चाहिए। तो फिर 8 में से ये 2 पावर 8 तो आ गया 256, हमें क्या क्या नहीं चाहिए। 8 में से हमने अगर कुछ नहीं लिया, वो नहीं चाहिए। 8 में से अगर एक एक एलिमेंट वाली भी नहीं चाहिए, तो 87 भी नहीं चाहिए। दो दो एलिमेंट वाली भी नहीं चाहिए, तीन तीन वाले एलिमेंट चलेगा, बराबर। तो ये आएगा 256, 256 -1 -8 -8C2, 8C2 कितना आएगा, 8 × 7 / 2, 4 अभी माइनस करो इसमें, 256 में से माइनस करोगे 1, तो आएगा 255, माइनस करोगे 8, 247 -48, तो 219। इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज, ये तो 2 पावर n में तो फॉर्मूला ही है। 120, लास्ट क्वेश्चन, 120। इन ए टाउन ऑफ दिस, तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। पहले देखेंगे सारा ए बी सी दिया है क्या, 2% बाई ऑल द थ्री पीपल। हाँ, जब भी तीनों का इंटरसेक्शन दिया जाएगा ना, तभी ये वेन डायग्राम बनाने का इजी पड़ता है, वरना हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन अगर तीनों का दिया है तब तो लगाने का, वेन डायग्राम बनाने का। 2% और उल्टा जाने का, 2% फैमिलीज बाय ऑल द थ्री न्यूज पेपर्स, तो ये 2 आएगा। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। और क्या बोला है, 4% बाई ए एंड सी, तो 4% बाई ए एंड सी, तो ये भी 2 आएगा ताकि 4 हो जाए। 3% बाई बी एंड सी, तो 3%, तो इसको 1 होना ही पड़ेगा। 5% बाई ए एंड बी, ए एंड बी का 5, तो इसको 3 होना ही पड़ेगा। 10% बाई सी, तो 10, 2 2 4 5, तो इसको 5 होना पड़ेगा। 20% बाई बी, तो 3 2 5 6, तो 14 आना पड़ेगा। 40%, इट वॉज फाउंड 40% बाई 40% ए, तो 3 2 5 2 7, 33 आ गया, 4 हो गया। और टोटल कितने फैमिली है, 10,000। तो 100%, हम देखेंगे पहले एक टोटल बंदे कितने आ गए। हमें निकाल देना नंबर ऑफ फैमिली विच बाय ओनली ए। अरे वो तो 33 आ गया ना, 100 में से 33, तो 10,000 में से कितना आएगा, 33, 3300, 3300। तो बस इतना ही पेपर डिस्कशन था, बाकी तो पूरा हो गया। बाकी पेपर तो इजी था, इंडिया लेवल पूरा, ज्यादा भी हार्ड नहीं था, ठीक था। बाकी तो किया हुआ है सब। ये सब वेरिएंस वाले, ये सब फॉर्मूला याद होने चाहिए, रिग्रेशन वाले, रिग्रेशन कोरिलेशन, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलो।